हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो आज आम जो स्टार्ट करवा सेटा होची जनरल साइंस रो पार्ट 2। ऑलरेडी बायोलॉजी क्लासेस आपनकर रिलीज हो जाई छि, जति कि इंपोर्टेंट चैप्टर्स आमे ताको कवर करचे। इंपोर्टेंट चैप्टर्स जति कि रो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपनकर पाखरे रहिया कथा सेटा आमे सेंड करि देई। ओके, तेबे एई पार्ट रे आमे स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन टाको कवर करबा। अगेन chapters that are specifically important, very important when it comes to OPSC OCS exam. सेदिन को चैप्टर रु केतले भी क्वेश्चंस आसी पारे, बट आमे सेही चैप्टर्स को मेनली कवर करबा जोडा कि बहुत ही इंपोर्टेंट अछि, बिकॉज साइंस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बहुत गुडे कॉन्सेप्ट्स एंती अछि जोडा कि कम टाइम रे धरि होबनी। सो बेसिक्स जेति कि कॉन्सेप्ट्स आमे सेरा डिस्कस करबा। तो आज रा क्लास रहइबो ऑन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, तो देखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अपन जानी जे भी क्लास 12 क्लास 11 रे प्रथम दर फिजिक्स ओके पढ़ा स्टार्ट कर अपन देखते प्रथम चैप्टर टी था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट था। अच्छा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कौन देखा। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर और न्यूमेरिकल मेजर accompanied by a unit. Okay, कौन से भी फिजिक्स रे कौन से भी फिजिकल क्वांटिटी ओके सदा बेले आपनको किए पचारला कि ना ये जिनसटार लेंथ केते, एटार मास केते, ए जिनसटा केते पावर अछि, माने कोन फिजिकल क्वांटिटी जतल भी जने पचारछन्ती मन रखंतु फिजिकल क्वांटिटी दुईटा जिनस थाए, गोटे न्यूमेरिकल पार्ट थाए आ गोटे थाए तार कोन यूनिट, जेमिति कि लेंथ 5 किलोमीटर ओके, जेमिति कि वेट 600 ग्राम ओके, बा जेमिति कि पावर 50 वाट। तो प्रत्येक जिनस को एक्सप्रेस करिवार फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करिया पई आपन गोटे नंबर भी दरकार, ता सहित गोटे यूनिट मध्य दरकार। अच्छा, यूनिट ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, किंतु जो यूनिट्स गुडा आपण अलगा क्वांटिटीज रो डिराइव करूछंती सेमान को डिराइव्ड क्वांटिटीज बा डिराइव्ड यूनिट्स बोली कुहा होची। A complete set of these units, both the base unit and derived unit, is known as the system of units. Now, तीनिटा टाइप रो यूनिट सिस्टम अच्छी। ओके, डायरेक्टली स्किप करबा से पार्ट को कौन कौन अच्छी सीजीएस सिस्टम। ओके, सीजीएस माने सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। आपण जदि लेंथ को सेंटीमीटर यूनिट रे दउछंती ओके, मास को जदि ग्राम रे दउछंती और टाइम को जदि सेकंड रे रिप्रेजेंट करूछंती ताले सेटा को सीजीएस सिस्टम कुआ जिवो। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, अगेन लेंथ, P stands for pound, again mass, S stands for second. Now MKS system, M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for second. तो तीनटा basic way CGS, FPS और MKS system generally use करा जाए worldwide. Now जेहेतु इंटरनेशनली किंतु गोटे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को नबा कथा ओके, एमतिया गोटे यूनिवर्सल यूनिट नबा कथा जोटा कि सबु लोक सबु जगह यूज करथबे बा जानि थिबे। तो सेति पई आमे गोटे एमितिया सिस्टम भी यूज करूछु व्हिच इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एट एवरी प्लेस, और सबु लोकन को प्राय से यूनिट विषय जणा थाए। ताकू कोन कुआ जाय ओके, एसआई बा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोली किनी कुआ जाय। ओके, now SI systems okay, केतेटा बेस यूनिट्स अछंती, देयर आर 7 बेस यूनिट्स। SI सिस्टम रे 7टा बेस यूनिट्स अछंती। कोन कोन से बेस यूनिट्स ओके, प्लेन ओके, ए रोटे जिंस देखंतो से 7 बेस यूनिट्स को छाडी देले 7टा बेस यूनिट तो अछंती, 7टा बेस यूनिट को छाडी देले दुईटा आउरी अलगा यूनिट्स भी दिया है, माने टोटली SI यूनिट्स क्षेत्र रे आपण कोन पाइबे कि 7टा बेस यूनिट प्लस आ सहित आउ एक्स्ट्रा दुईटा यूनिट को डिफाइन करा हेची। ओके, को एक्स्ट्रा दुईटा यूनिट देखिबा प्लेन एंगल जोटा कि होची डी थीटा, आपण जानि छथि एंगल यूज करथबे प्लेन एंगल, आउट होची सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ओके, डी थीटा टा आपण को केस रे मिलिबो ओके, 2 डायमेंशनल केस रे आपण को जो एंगल मिलिबो, 3 डायमेंशनल केस रे जो एंगल टी मिलिबो सेटा होची आपण सॉलिड एंगल। ओके, ना एटी गोटे जिंस देखंतु
द यूनिट फॉर प्लेन एंगल रो यूनिट होची रेडियन ओके सिंबल होची यार रैड जेबे कि सॉलिड एंगल माने 3D एंगल जोटा तार होची कोन स्टेराडियन तार यूनिट होची स्टेराडियन ए दीटा जाको ओके माने आपणकर प्लेन एंगल हो बा सॉलिड एंगल हो ए दुईटा जाक ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस माने कोन आंकर किछि सेमिति लेंथ मास ओके बट टाइम क्षेत्र रे आपण आपको क्वांटिफाई करि परिबे नाही दे आर टोटली डायमेंशनलेस इन नेचर ओके नाउ सातटा बेस यूनिट जो अछंती सेगडा कोन एठी देखंतु प्रथम होचे टाइम यूनिट मध्ये देखंतु टाइम एसआई बेस यूनिट्स देछि होची सेकंड लेंथ रो एसआई यूनिट होची मीटर मास रो एसआई यूनिट होची किलोग्राम इलेक्ट्रिक करंट रो एसआई यूनिट होची एम्पियर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ओके टेम्परेचर एसआई यूनिट होची केल्विन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गोटे जिंस रे केते जिंस अछि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अछि मोल ओके आउ लुमिनस इंटेंसिटी गोटे जिंस जो निज भीतर लाइट बाहर करछि तार ब्राइटनेस केते ताको आबे मेजर करया पे यूज होछि कोन कैंडेला एई सातटा जाक सेकंड मीटर किलोग्राम एम्पियर केल्विन मोल कैंडेला होजोनी कोन द 7 बेस यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम ओके नाउ इट किछि बेसिक देखंतु ओके we also use certain special length unit for short and large length देखो तो 1 Armstrong okay 1 Armstrong माने कोन एटा उटे length रो unit but particularly used for very short length Fermi भी similarly it is also used for very short lengths किंतु astronomical unit ये सब गडा लेंथ रो ही यूनिट एठी खाली देखा होची जे केमिति आपण करो आपण हिसाब रे को एरिया को फील्ड रे आपण मेजर कोचदी ताकू नै कि आपण यूनिट चूज करि परिबे जदि आपण बहुत ही सूक्ष्म जिंस सहित काम करूचंती यू हैव टू टेक द लेंथ यूनिट एज फर्मी एंड एंगस्ट्रॉम ऑन द अदर हैंड जदि आपण प्लैनेट्स को भीतर डिस्टेंस सन आउ कोनोसी प्लैनेट भीतर डिस्टेंस मेजर करूचंती आपण को नबाक पड़िबो यूनिट हिसाब रे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तबे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होची कोन इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ सन और अर्थ भीतर जो एवरेज डिस्टेंस अछि आको आमे गोटे यूनिट हिसाब रे कन्वर्ट करिछु जाको कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली कि कहवा जाउची सिमिलरली 1 parsec okay 1 parsec is the distance at which average radius of earth orbit subtends an angle of 1 arc second so different field पाई different magnitude पाई different dimensions पाई आपण अलग अलग यूनिट से सेम जिंस रो फिजिकल क्वांटिटी रो नै पारिबे now mass आपण जानि थेबे mass कोन it is a basic property of matter it does not depend upon temperature mass आपनकर टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करेनी mass आपनकर प्रेशर ऊपर डिपेंड करेनी mass आपनकर लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस ऊपर डिपेंड करे नाही एसआई यूनिट ऑफ mass होची कोन किलोग्राम अच्छा किंतु जेतबळे आपण कोनोसी एटम बा मॉलिक्यूल सहित काम करूचंती सेतबळे ऑब्वियसली किलोग्राम नै परिबेनी कारण आपण को वर्किंग फील्ड ता बहुत छोट हो जाय से जगह आपण को यूनिट नेबे 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1 ओके तो एई जिंसटे को नेबे जस्ट एग्जांपल कोडा शो करू कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स रे आपण को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होबा को पड़िबो ताकि कैलकुलेशंस वगैरह रे आपण को बहुत इजी होबो बोली कि अच्छा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अच्छा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज माने कोन ओके प्रत्येक टी को जे प्राय फिजिकल जते भी फिजिकल क्वांटिटीज आपन को चारि पाके जते भी फिजिकल जिंस अछि और ताकु तो आपन क्वांटिफाई करूचंती प्राय फिजिकल क्वांटिटी को आपन तीनटा फॉर्म रे विभक्त करि परिबे माने कुआ जायते प्रत्येक टी फिजिकल क्वांटिटी रे किछि अमाउंट ऑफ मास थिबो किछि अमाउंट ऑफ लेंथ थिबो किछि अमाउंट ऑफ टाइम थिबो MLT ओके जेतले आपण सेही फिजिकल क्वांटिटी को मास लेंथ टाइम हिसाब रे कन्वर्ट करूचंती ताले ताको कुआ जाय dimensions of physical quantity now what example देखिबार okay let us first of all take length होची गोटे physical quantity length रे किछि mass न थाए तो m0 length किंतु गोटे dimension अछि time मध्य किछि इंडिकेट हो तो m0 l1 t0 होची length रो dimension but distance भी नहीं परिबे
डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पारिबे ए समस्त किंतु जदि आमे वेलोसिटी बा स्पीड रो डायमेंशन नबा you all know that velocity or speed is distance or displacement by time okay? distance किबा displacement by time अच्छा तो भाव तार फिजिकल जदि अपन डायमेंशन बाहर करते तो कौन हम ना ये डिस्टेंस अच्छी टाइम अच्छी मास रो किसी इंडिकेशन नहीं m0 अच्छा डिस्टेंस किंतु अच्छी माने लेंथ अच्छी l1 अच्छा टाइम अच्छी किंतु टाइम कौन अच्छी रिवर्स वे रे अच्छी माने कौन तले अच्छी तो आम केमती आपको रिप्रेजेंट कर परिबा एमती m0 l1 t minus 1 is the dimension of your velocity okay or speed okay तो प्रत्येक टी जिंस को आपण एमती नोटिफाई करि परिबे m l t मैटर रे हाँ केवल दीटा जिनस हम देखले डायमेंशनलेस अच्छी जोटा कि जस्ट आगु हम डिस्कस कले राडियन और स्टेराडियन माने आपण जदि एंगल मेजर करछंती 2D एंगल बा सॉलिड एंगल माने 3D एंगल मेजर करछंती से मानकर कोनोसी प्रकार डायमेंशन नाही माने आपण से मान को मास लेंथ टाइम हिसाब रे कन्वर्ट करि परिबे नाही अच्छा द लेंथ हैज डायमेंशन l मास m टाइम t जदि कोनोसी रे इलेक्ट्रिक करंट अछि यू कैन यूज a थर्मोडायनामिक टेम्परेचर थिले यू विल यूज k ल्यूमिनेस इंटेंसिटी थिले cd किंतु प्राय आमे जनरली जो सब्सटेंसेस सहित डील करूचो से मानकर प्राय mlt ही थाए मास लेंथ और टाइम ही थाए अच्छा the dimensions of physical quantity are the powers to which the base quantities are raised to represent that quantity first law of motion okay now लेंथ यूनिट विषय जस्ट आगु एग्जांपल देली म आपन को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ए सब जिंस गुडा का सहित रिलेटेड ऑब्जेक्ट इन मोशन सहित रिलेटेड तेनु आमे एबे टिके मोशन रे थिबा ऑब्जेक्ट विषय डिस्कस करबा ना आपन जानि थिबे जे कोनोसी ऑब्जेक्ट जत मोशन रे थाए देयर आर थ्री बेसिक लॉज ओके दैट गवर्न द मोशन ओके से तीनटा जाक लॉ होची कोन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो गोटे पर गोटे आमे सेही लॉज गुडा को देखिबा तो प्रथम होची फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोन कहूची एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise आ माने कोन फॉर एग्जांपल एटा उटे बॉडी आ ये मूव करी चलची ता बाटरे यूनिफॉर्म मोशन माने कोन यूनिफॉर्म मोशन माने जहार एक्सेलरेशन होची 0 बा कहि परिबे जहार गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी अछि यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी रो सेम अछि थ्रू आउट द मोशन तो जदि गोटे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन रे अछि माने फॉर एग्जांपल ये ईस्ट डायरेक्शन आड़ को जाउची ओके आ ईस्ट डायरेक्शन को जो जाउची ये 20 किलोमीटर पर आवर रे जाउची म यूनिफॉर्म मोशन रे अछि ओके नाउ ए ऑब्जेक्ट टी तार स्व इच्छा रे बा आपे आपे ओके स्टॉप हेई परिबो नाही आको स्टॉप करिया को हेले गोटे एक्सटर्नल फोर्स निहाती दरकार ता माने कोन without external force this object which is moving in an uniform velocity will not stop okay similarly जदि गोटे ऑब्जेक्ट रेस्ट अछि चालुनी ओके वेलोसिटी 0 टोटली चालुनी एठी ओके ना ये आपे आपे ही मूव करबा स्टार्ट करबो नाही ओके ये मूव केतो बळे करबो जदि आपण ता परे गोटे एक्सटर्नल फोर्स देबे तेबे जाइकिनी ये मूव करबा स्टार्ट करबो ता माने कोनोसी ऑब्जेक्ट जदि यूनिफॉर्म मोशन रे अछि बा जदि ऑब्जेक्ट टी आपणकर रेस्ट रे अछि माने टोटली मोशन नाही ताले ता सो इच्छा रे बा आपे आपे से मोशन रे आसी जीव नाही ओके बा से आपे आपे कोन करबनी बा आपे आपे से मोशन रो रेस्ट को बा चेंज होबनी तार मोशन रो कोनोसी भी फील कोन पई कहीं ना आपण एक्सटर्नल फोर्स किछि अप्लाई करूनांती एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कले ही गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशन रो जो स्थिति अछि सेटा चेंज हेई पारि एटा को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छा एठी देइछि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन माने कोन आ माने होछि जीरो एक्सेलरेशन किबा मु जोटा कहली आपण को यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एठी देइछि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यदि आउरी सिंपल वे रे कहबा माने कोन इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो माने कोन जदि आपण कोनोसी फोर्स अप्लाई करू नाहंती गोटे बॉडी रे ताले मने रखंतु एक्सेलरेशन भी होबो जीरो आपण समस्त प्राय बाइक स्कूटी चलेथबे कार चलेथबे
न से केस रे आपण एक्सेलरेशन माने कोन एक्सेलरेशन माने चेंज इन वेलोसिटी आपण गोटे स्पीड रे जाउछन और सडनली स्पीड चेंज कले किंबा आपण स्पीड रे अछंती से स्पीड रे अछंती किंतु कोन कले डायरेक्शन सडनली चेंज कले ए दुईटा जाक जिंस को हमें एक्सेलरेशन बोली किने कहबा किंतु विदाउट अप्लाइंग फोर्स हम एक्सेलरेशन भी केबे चेंज हेई पारिबो नाही तो से देला जदी एक्सटर्नल फोर्स 0 ताल एक्सेलरेशन मध्य 0 अच्छा acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body okay non-zero गोटे acceleration केतबळे हबो force हेले ही acceleration रो अस्तित्व अछि जदि force नाही ताले acceleration रो मध्य किछि अस्तित्व नाही तो आपण को सेही जिंसटी बुझिया को पड़िबो एई केस रे ओके नाउ नेक्स्ट देखिबा Newton's second law of motion. Okay, first law में जान ले second law of motion कौन? The first law refers to the simple case when net external force of a body is zero. Second law of motion refers to the general situation when there is a net external force acting on the body. It relates the net external force to the acceleration of the body. अच्छा, first law of motion, second law of motion interrelated. कौन पाई मो कहूची? First law simply एटा कहला, जदि मु briefly कहबी first law एटा कहला कि no external force, no acceleration. ठीक से ही जिनसटी को इनडायरेक्टली सेकंड लॉ कहूची केमिति इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स जदि हमें एक्सटर्नल फोर्स दउचे तले से केस रे कोन मिलिबो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन ठीक एक्जाक्टली तो आपण कहि परिबे कि आपनकर न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ दे आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर बोली किनी now momentum of a body कौन it is defined as the product of mass और velocity एटा मन रखता momentum of a body माने mass into velocity अच्छा momentum is clearly a vector quantity हमें अच्छा स्केलर और वेक्टर ओके आ भीतर डिफरेंस टी मते लागुच आपण जानि थिबे स्केलर और वेक्टर डिफरेंस कौन स्केलर माने एठी केवल मैग्नीट्यूड इंपोर्टेंट थाए डायरेक्शन एठी हमर कोनोसी प्रकार इंपोर्टेंट न थाए डायरेक्शन न देले भी चलिबो वेक्टर ऑन द अदर हैंड एठी कोन मैग्नीट्यूड सहित एठी डायरेक्शन मध्य इंपोर्टेंट तो जदि आपण मैग्नीट्यूड सहित निजर डायरेक्शन मध्य कहउचंती जेमति कि मु 4 मीटर पर सेकेंड रे गली आउ ईस्ट डायरेक्शन रे गली जदि जण को स्पेसिफिकली ए इंफॉर्मेशन तो दोचंती माने आपण जण को वेक्टर इंफॉर्मेशन दोचंती ओके वेक्टर ना स्केलर माने कोन जदि खाली आपण एया कहले कि मो गाड़ी टी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे थिला को डायरेक्शन में थिला एटा मैटर करूनी खाली आपण कहउचंती 40 किलोमीटर पर आवर माने आपण कोन कहले केवल मैग्नीट्यूड कहले डायरेक्शन कहले नहीं माने आपण कहले कोन स्केलर ओके तो स्केलर और वेक्टर अच्छा ये गोटे जिस मन रखु स्केलर वेक्टर आम जेहेतु मोशन विषय पढ़ुचु तो मुझे को क्वांटिटीज आप स्केलर थाए को क्वांटिटीज आपनकर वेक्टर थाए अच्छा डिस्टेंस हूँ स्केलर किंतु डिस्प्लेसमेंट हूँ आपनकर वेक्टर स्पीड हूँ स्केलर ऑन द अदर हैंड आपण जदि वेलोसिटी नौचंती सेटा हूँ आपनकर वेक्टर ओके तो मन रखी था ओके कारण डिस्टेंस वेलोसिटी स्पीड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस कौन अच्छा मोमेंटम टी भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम जानिले कौन मास इनटू वेलोसिटी अच्छा द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन इज एज फॉलोज अच्छा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आम जस्ट आगु पढ़ले जो थे कौन थी जदि फोर्स अप्लाई कर तो एक्सेलरेशन भी आसो तेज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बहुत अनेक प्रकार माने स्टेटमेंट दे पारे जमी ये गोटे प्रकार देती रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स ये कौन देला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम माने पी अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माने टाइम हिसाब से मोमेंटम केते चेंज है the rate of change of momentum आपनकर directly proportional का सहित directly proportional applied force सहित directly proportional तो एटा भी गोटे way of notifying second law of motion अच्छा
ये देखो फोर्स माने कौन फोर्स होची चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम F इज इक्वल टू ओके अच्छा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम मोमेंटम केते ये डायरेक्टली दे दीजिए मैं सेटा लिखुची चेंज इन मोमेंटम माने आपनकर मोमेंटम टा कोन आकार रे आसीबो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी हला मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टाइम होची कोन जो भी टाइम रे आपण कले अच्छा ये देखो वेलोसिटी बाय टाइम हूँ आपंकर कौन एक्सेलरेशन माने मास इंटू एक्सेलरेशन ओके माने हमें कहि परिबा ए केस रे कौन कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ma in SI unit force is one that causes an acceleration of 1 meter per second square okay तो 1 meter per second square जी एक्सेलरेशन कॉज करुची 1 kg सब्सटेंस रो ताको आपण कोन बोली कहि परिबे फोर्स बोली किनी कहि परिबे ओके दिस इज नोन एज दिस यूनिट इज नोन एज न्यूटन इट मन रखंतु फोर्स टाको कोन कहआ जाय न्यूटन बोली किनी फोर्स रो यूनिट होची कोन न्यूटन ओके तो एटी मन रखि थांतु फोर्स होची कोन चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम ओके जदी हमें देखिबा मोमेंटम माने m into del v by time okay del t तला हमर आसबो कोन मास into acceleration okay एटी भूल अछि एटा गोटी के एटी सच दबा f is equal to mass into acceleration अच्छा SI unit force is one that causes an acceleration तो आपण फोर्स रो SI unit केते जतरा गोटे kg मास ऊपर आपण एमिति फोर्स देले कि ता जो एक्सेलरेशन क्रिएट हला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रो तेबे से फोर्स गोटे SI यूनिट फोर्स बोली किने कहिबे आ ताकू रिप्रेजेंट करा जाय एज न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर Now, second law हिसाब रे एटा तो हमें जान ले यदि force 0 it means that acceleration is 0. The second law is obviously consistent with the first law. मैं आपन को आगरो कहतले कि first law and second law they are very much related to each other. Okay. Now, next देखिबा if a force is not parallel to the velocity of the body but makes some angle with it, it changes only the component of velocity along the direction of force. Okay. এই जो पार्टा बेसिकली देछि एटा मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट पय रिलेटेड ओके हमको डायरेक्टली ए पोर्शन से क्वेश्चंस आसीबो नाही गोटे सिंपल वे रे कहूची ओके जदी आपण देखिले कि वेलोसिटी गोटे ऑब्जेक्ट रो ए डायरेक्शन रे होची ना फॉर एग्जांपल ओके ए जो ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स ए डायरेक्शन रे अप्लाई हला माने गोटे एंगल रे वेलोसिटी रो अप्लाई हला तो फोर्स टी केवल सेई कंपोनेंट को ही चेंज करिवो जो कंपोनेंट सेई कंपोनेंट ना कंपोनेंट माने कोन प्रत्येकटी फिजिकल क्वांटिटी रो गोटे कंपोनेंट थाए कंपोनेंट माने कोन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थाए 3 डायमेंशनल माने कोन x एक्सिस रे आपण ताको रिप्रेजेंट करि परिबे y एक्सिस रे रिप्रेजेंट करि परिबे और z एक्सिस रे आपण रिप्रेजेंट करि परिबे ओके एटा को कंपोनेंट बोली किनी कुहा जाय ओके प्राय हमें जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो हमें तार 2 डायमेंशनल कंपोनेंट माने x एक्सिस और y एक्सिस विषय ही नॉर्मली कंसीडर करू तो जदी वेलोसिटी टा ओके आपण नै परिबे कोन सपोज ए डायरेक्शन ओटे वेलोसिटी होची तो आपण नै परिबे कि वेलोसिटी रो x एक्सिस रे केते कंपोनेंट अछि y एक्सिस रे केते कंपोनेंट अछि जदी एठी देखंतु एठी जो वेलोसिटी टे अछि एटा कंप्लीटली आपणकर कोथरे अछि ओके एठी नेमिंग टा मु भूल करछि एटा होछि y एक्सिस एटा होछि x एक्सिस तो एठी देखि परते आपन को वेलोसिटी टा खाली x एक्सिस रे अछि तो फोर्स टी जो अप्लाई हबो सेटा केवल x एक्सिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को ही चेंज करबो कारण y एक्सिस कंपोनेंट तार टोटली नाही impulse माने कोन we sometimes encounter examples where a large force acts for a short duration बेले बेले आपण देखिबे गोटे बहुत बड़ फोर्स ओके गोटे बहुत कम टाइम पई ओके गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ी पारे ओके नाउ ड्यू टू दैट ओके गोटे फाइनाइट चेंज हेई पारे से बॉडी रो मोमेंटम तो आपण जानले मोमेंटम माने कोन मास इनटू वेलोसिटी आउथरे कोची बेले बेले आपण देखिबे खूब कम समय रे ही गोटे खूब बड़ फोर्स गोटे ऑब्जेक्ट बा गोटे मास ऊपर पुट हेई गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर पुट हेई पारे ना ए टाइप रो लार्ज फोर्स बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन को आम इंपल्स बोली कहबा जहाँ जो कि बॉडी रो मोमेंटम रे किछि चेंज हेई पारे जेंति कि एग्जांपल देछि
गोटे बॉल हिट कला गोटे वॉल को आउ बाउंस बैक कला the force on the ball by the wall acts for a very short time when the two are in contact okay ball अपन फेंगु छथि जो रिबाउंड कला कोन पे रिबाउंड कला कारण गोटे फोर्स एक्ट कला वॉल आउ बॉल भितरे किंतु जदि सेमि देखिबा अपन फिंगिले बॉल टा रिबाउंड हला ता भितरे बहुत कम टाइम पाई ही से फोर्स टी लागू हेछि ओके तो एई टाइप रो फोर्स को अपन कोन इंपल्स बोली किने कहबे often in this situation the force and the time duration are difficult to ascertain separately अपन एई क्षेत्र रे फोर्स आउ टाइम को ओके एका संगरे मापिबा बा तांको सेपरेटली मापिबा डिफिकल्ट हे जाय थाए ओके moreover the product of force and time which is the change in momentum of the body remains a measurable quantity this product is called impulse तो impulse माने आपण जणने पारले कोन impulse माने जेतो गोटे force large force आपण short time duration पय दोचंती सेतले separately force बा separately time को आपण मेजर करबा possible नुहे तेणु आम एज अ होल कौन कर से फोर्स आउ टाइम रो मिसिकिनी गोटे यूनिट क्रिएट करूछु जोटा कि होची इंपल्स तो इंपल्स माने कोन फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन which is equal to change in momentum तो मन रखंतु impulse माने कौन force into time okay which is equal to change in momentum a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called as impulsive force अच्छा थर्ड लॉ ऑफ मोशन एटा तो अपन समस्त पार्टी थिबो कोन एटा देछि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सबु एक्शन जहां भी होछि तार गोटे इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन हुए माने मैग्नीट्यूड रे इक्वल थाए बट डायरेक्शन रे ऑपोजिट थाए अच्छा फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर रे मन रखंतु फोर्स गोटा सदा बेले पेयर रे थांती फोर्स ऑन अ बॉडी ए by B is equal and opposite to the force on the body B by A. For example, अपन दीटा जिनस रखी चंदी एठी A और एटा होची B. Okay, naturally दीटा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट रछ माने A गोटे फोर्स पकोथबो B ऊपर को B मध्य गोटे फोर्स पकोथबो A ऊपर को किंतु मने रखि थांतु A जति फोर्स B ऊपर को पकोची ठीक सेही अमाउंट ऑफ फोर्स ही B A ऊपर पकोची बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हिच मींस दैट फोर्स सदा बेले आपण को इन पेयर ही मिलिबो अच्छा there is no cause effect relation implied in the third law the force on A by B and the force on B by A act at the same instant और एका टाइम रे ही दुईटा जाको एका संगरे काम करू थांती now conservation of momentum माने कोन सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर्टिकुलरली डील करंती ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम माने कोन मु एटा को ननी मोटी सिंपल वे रे आपन को कहूची now for example गोटे बॉल अच्छी बॉल ए आर फॉर एग्जांपल आपण आपको फिंगिले बहुत जोरे फिंगिले माने आर गोटे ऑलरेडी से बॉल गोटे मास थिबो फिंगिले माने गोटे वेलोसिटी आसी गला ए मास इनटू वेलोसिटी होची ए बॉल रो मोमेंटम अच्छा मैं आपको लिखि दोची कोन p होची मोमेंटम p ऑफ बॉल ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन रे ओके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन रे कौन होची ना आपण को सांग गोटे स्टोन फिंगुची ओके ना ए स्टोन रो भी मास अछि ए स्टोन रो भी वेलोसिटी अछि तो हमें आरो मोमेंटम को नै जबा p स्टोन ओके ना टोटल मोमेंटम जदि हमें ए सिस्टम टिकु नबा बॉल और स्टोन रो सिस्टम को ओके तो एठी टोटल मोमेंटम केते मोमेंटम ऑफ बॉल इनटू मोमेंटम ऑफ स्टोन ओके टोटल मोमेंटम केते होबो एठी मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ स्टोन ना निज निज पाख को आसुचंती आ माने फॉर एग्जांपल बाडे हे गेले निज संगरे बाडे हला पर कोन हला ना बॉल टा हेवी थिबारो स्टोन रो किछि खंड उडी गला एबे कोन हला ना बॉल अछि ओके स्टोन टी दुईटा खंड हे गला ना अपन जानते तो दुईटा जिंस निज निज सहित बाडे हेबे ऑब्वियसली तको वेलोसिटी आ समान रहिबनी ओके आ इटी तो से दुईटा खंड हे गला माने मास मध्य आर अलगा हे गला खंड खंड हे गला ओके दी पाडले ता माने एबे कोन हला एटार नुआ गोटे मोमेंटम आसिला pb1 ए स्टोन रो पार्ट 1 रो गोटे मोमेंटम आसिला ए स्टोन रो पार्ट 2 रो गोटे मोमेंटम आसिला अच्छा किंतु ए माने सेही सिस्टम रही पार्ट ओके ए एका जिंसटी एबे तीन खंड रे हे गला अच्छा किंतु तला आपण मेजर करिवे टोटल मोमेंटम ता आपण देखिबे ए सिस्टम रो टोटल मोमेंटम जेते ए सिस्टम रो मोमेंटम मध्य सेते थिला ता माने कोन गोटे सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स रो टोटल मोमेंटम केबे चेंज हुए नाही ओके टोटल मोमेंटम केबे चेंज हुए नाही रादर आपण देखिबे कोन
कि दीटा जाकर मोमेंटम गोटे सिस्टम अच्छी माने तांको भीतर मोमेंटम सदा बेले समान ही थाए एटा को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते जोटा कि सेकेंड लॉ आउ थर्ड लॉ मोशन अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा फ्रिक्शन फ्रिक्शन पार्टा इंपोर्टेंट फ्रिक्शन कौन इफ द अप्लाइड फोर्स F where the only external force on the body it must move with acceleration F by m however small clearly the body remains at rest ना आपण भावंतु कि गोटे अलमीरा अछि बहुत बड़ा अलमीरा हेवी अलमीरा ओके आपण एटी छिड़ा आइचंती ताको पुश कले फॉर एग्जांपल फोर्स देले F ना फोर्स देले माने तो मूव होबा कथा किंतु अलमीराटा बहुत हेवी अच्छी तो आप फोर्स देले भी से मूव हो कि ना मूव हेनी ओके अच्छा ये मूव कौन हेनी कारण आम तो किसी समय अगर पढ़ले कि एक्सटर्नल फोर्स देले माने ऑब्जेक्ट रेस्ट रे थिले ऑब्जेक्ट मूव करवा स्टार्ट करिवो तो ये असुविधा कौन हुए तो ये गोटे जिनस देख क्लियरली द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज सम अदर फोर्स कम्स इनटू प्ले इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निहाती भाव में मुझे फोर्स अप्लाई करुच्ची घुंचिया कथा घुंचुनी ता माने गोटे अपोजिट फोर्स भी इक्वल अमाउंट किए गोटे दौची से मो ऑब्जेक्ट मूव करूनी ओके ना ये जो फोर्स टी ओके जनरली को डायरेक्शन रे थाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे थाए एंड ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्स F मु देली ए फोर्स टी तार ऑपोजिट भी अच्छी और हॉरिजॉन्टल भी अच्छी अच्छा resulting in zero net force जहाँ जो कि देखुचे एटा F है फॉर एग्जांपल एटा स्मॉल f फोर्स अच्छा एटा देखा कि F इज इक्वल टू F माने नेट फोर्स टी एक्चुअली होची केते जीरो और सेति पई ही अलमीरा टी मूव हो नाही अच्छा ये जो फोर्स टी F बोली कि लिखिली जहाँ जो कि ऑब्जेक्ट स्टैटिक रहउची ओके स्टैटिक माने कोन मूव करूनी तो तेनु हमें को ना दबा Fs ओके नाउ ये देला कि ये जो फोर्स जोटा कि पैरेलल अच्छी सरफेस ऑफ द बॉडी इन कांटेक्ट को ओके विथ द टेबल इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन द सबस्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छा ये जो फ्रिक्शन जो जेहेतु किसी मूवमेंट होनी तेणु आम या ना दबा एज व्हाट स्टैटिक फ्रिक्शन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम काइनेटिक फ्रिक्शन FK अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन माने कौन दरकार नहीं कि ऑब्जेक्ट स्टिल थिले ही ता अंडर फ्रिक्शन अच्छी ये मोशन रे भी अच्छी एनी बॉडी एनी लिविंग बीइंग एनी नॉन लिविंग थिंग जोटा कि मोशन माने फोर्स अप्लाई हिजे से मोशन रे अच्छी मोशन रे थिला बेले मध्य आपनकर फ्रिक्शन काम करू थाए ओके माने फ्रिक्शन यदि कोन सी जिंस रे आपन फोर्स दोचनी रेस्ट रे अच्छी सेटार रीजन भी फ्रिक्शन आपन यदि ठीक से चाली परछंती सब बेले मन रखंतु आपनकर चालीबा को बा कोन सी जिंस मूव करिया को भी गोटे फ्रिक्शन था जोटा कि अपोज करे ता सत्वे भी मूवमेंट हुए तेबे जदि फ्रिक्शन टी जो जिंस स्टैटिक अछि ताको कहबा स्टैटिक फ्रिक्शन तेबे जदि फ्रिक्शन देला परे मध्य ऑब्जेक्ट मूव करूछि तो हमें ताको ना दबा एज काइनेटिक फ्रिक्शन ओके स्टैटिक फ्रिक्शन FS नोटिफाई करा जाए ताको FK when there is no applied force there is no static friction एटा बहुत बढ़िया स्टेटमेंट मन रखथांतु यदि फोर्स ही दौना तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं ओके माने स्टैटिक फ्रिक्शन सेतबळे ही एक्जिस्टेंस रे आसीबो जेतळे आपण कोनसी प्रकार फोर्स अप्लाई करिवे इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स एटा सेतबळे ही आपणकर एक्ट करबा स्टार्ट करिवो जो मुहूर्त रे कि गोटे फोर्स अप्लाई हबो एज द अप्लाइड फोर्स F इंक्रीजेस जेमिति जेमिति आपण फोर्स इंक्रीज करी चलिबे आपणकर स्टैटिक फ्रिक्शन मध्ये इंक्रीज करिवो ओके remaining equal and opposite to the applied force up to a certain limit एटी ओटे देखंतु एटी ओटे हेवी बुक शेल्फ अछि आपण एटी अछंती आउ ठेलिले फोर्स देले इनिशियली टिके हल्का किनी फोर्स देले तो आपण देखिले कि ए फ्रिक्शन ताको अपोज करिबारो मूव करूनी अच्छा धीरे धीरे फोर्स रो अमाउंट ही आपण बढ़ेइले बढ़ेले जमीती देखुछंती स्टिल मूव करनी ता माने इनडायरेक्टली फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन टा भी इंक्रीज करूची अच्छा किंतु गोटे टाइम आसीबो जेतबळे कि ओके आपणकर फोर्स आग अपेक्षा बहुत बड़ थिबो जेतबळे कि ए फोर्स टी एते बड़ थिबो कि आउ ए स्टैटिक फ्रिक्शन टी काम करिवनी आ फाइनली बुक सेल्फ टी ता जागरो मूव करि जिवो ता माने कोन स्टैटिक फ्रिक्शन सदाबळे काम करे नाही गोटे सैचुरेशन पॉइंट आसी जाए ता ऊपर को जदि आपनकर अप्लाइड फोर्स हे जाउची ताहाले फ्रिक्शन थिबा सत्वे भी आपनको जिंस मूव करबा स्टार्ट
करिबो अच्छा static friction opposes impending motion the term impending motion means motion that would take place but does not actually take place under the applied force if friction were absent kinetic friction like static friction is found to be independent of the area of contact अच्छा तेबे एठी जिनसटी केते एरिया रो कांटेक्ट रे अछि एटा मैटर करूनी आपनकर फ्रिक्शन मेजरमेंट बेले स्टैटिक फ्रिक्शन हो बा काइनेटिक फ्रिक्शन हो से एरिया ऑफ कांटेक्ट ऊपर डिपेंड करेनी से केवल एक्सटर्नल फोर्स जो दोचोदी तारी ऊपर डिपेंड करूची अच्छा वी ऑफन रिगार्ड फ्रिक्शन एज समथिंग अनडिजायरेबल बहुत तरह माइंड आसे कि फ्रिक्शन ता माने गोटे अदरकारी जिंस कारण जो जिनसटी हम स्मूथली करि पारथांते मूव एपटरो सेपटो सेटा हेई पारुनी किंतु एटा भी जानिया कथा कि फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वली इंपोर्टेंट किंतु हां एबे हमें देखिबा जे फ्रिक्शन जो कोन हुए नेगेटिव टा फर्स्ट देखिबा जनरली फ्रिक्शन जो मशीन्स भितरे वेयर एंड टियर हुए ओके बारंबार दिटा मशीन जदी निज निज सहित कांटेक्ट रे आछते ताको भितर फ्रिक्शन जो कोनोसे प्रकार डिस्ट्रक्शन हे पारे वेयर एंड टियर हे पारे अच्छा तो आमे हां आ जो हीट मध्य प्रोड्यूस हुए फ्रिक्शन जो जोटा कि इनडायरेक्ट गोटे पावर लॉस हुए so how can we save ourselves from friction तार देछि किछि पॉइंट्स प्रथमे तो lubricants are way of reducing kinetic friction in a machine आपण जदि छुआ बेले केबे साइकिल चले थेबे ओके देखिथिबे कि ऑयलिंग बेले बेले जिंसर दरकार बहुत गोटे जिंस अछन जोटी कि lubrication दरकार अछि तेबे जाय कि kinetic friction reduce हे पारिबो another way होछि आपण बॉल बेयरिंग यूज करि पारिबे मूविंग पार्ट ऑफ मशीन रे बॉल बेयरिंग जोगो बेसिक फ्रिक्शन हुए नाही कौन पाई since the rolling friction between ball bearing and the surface in contact is very small power dissipation is reduced okay ball bearing जोगु जो फ्रिक्शन टी आसे सेटा को रोलिंग फ्रिक्शन कहती और रोलिंग फ्रिक्शन टी बहुत कम थाए तेणु इजीली ताको ओवरकम करि हुए अच्छा आ गोटे होचे कोन अ थिन कुशन ऑफ एयर मेंटेन बिटवीन सॉलिड सरफेसेस इन रिलेटिव मोशन इज अनदर इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन दुईटा डिवाइस भितरे जदि आपण गोटे एयर कुशन ओके एयर गैप रखी पारुचंती सेटा मध्ये आपण को फ्रिक्शन रो हेल्प करी पारिबो अच्छा फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड को जगह रे kinetic friction that dissipates power is nevertheless important for quickly stopping relative motion गाड़ी रे अचानक से ब्रेक लगोचंती काम रे आसी गला कोन kinetic friction okay similarly static friction is important in daily life we are able to walk because of फ्रिक्शन आमे चली पारुचो फ्रिक्शन जदि न थांता आमे बस गोड़ देई थांते स्लिप करी पुनी तळे पड़ी जानते इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ कार टू मूव ऑन अ वेरी स्लिपरी रोड on an ordinary road the friction between the tires and the road provides the necessary external force to accelerate so walking driving ए सब जिंस पई बेसिकली आपनकर काइनेटिक आपनकर काइनेटिक फ्रिक्शन दरकार पडुची अच्छा सर्कुलर मोशन कोन the force directed towards the center is called centripetal force for example गोटे ऑब्जेक्ट अछि जोटा कि एमती गोल गोल बुलुची सर्कुलर मोशन अच्छा जेतले सर्कुलर मोशन बुलुची आपण देखिबे ऑब्जेक्ट रो फोर्स सेंटर आडको ओके द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ए जो सेंटर आडको डायरेक्टेड फोर्स ताको कोन कहआ जाय सेंट्रीपिटल ओके ए गोटे जिंस होची सेंटर आड़ को डायरेक्टेड हेले फोर्स टी होची सेंट्रीपिटल किंतु जदि आपनकर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट टी ओके सेंटर रु बाहर आड़ को माने अवे फ्रॉम द सेंटर जदि फोर्स दोची ताले ताको कोन कहआ जीवो सेंट्रीफ्यूगल तबे मने रखंतु आपनकर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रे यूनिफॉर्मिटी भूल लिखली सर्कुलर मोशन रे आपण देखिबे कोन अछि आपनकर सेंट्रीपिटल फोर्स माने कोन ए फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अच्छा for a stone rotated in a circle by a string the centripetal force is provided by the tension of the string now centripetal force for motion of a planet around the sun is the gravitational force on the planet due to sun for a car taking a circular turn on a horizontal road the centripetal force is the force of friction तो सेंट्रीपिटल फोर्स तार ओरिजिनल वे रे रुहेनी से कोन करता है अलग अलग फॉर्म रे एग्जिस्ट करे जेंति केटी देला आपण बोले स्टोन टे गोटे स्ट्रिंग सहित अटैच करी ताको गोल गोल बुलाउचती तो आपण का हाथ रे जो स्ट्रिंग धरिचंती आ स्टोन टी एमती टाणी हेकिनी जो तारटी रहउची ओके से जो तारटी गोटे प्रकार फोर्स रहउची ताको टेंशन बोली कहूचे ओके तो जतले स्टोन टी को एमती रोटेट करछती तो सेंट्रीपिटल फोर्स टी ए जगह कोन थाए टेंशन टी थाए नाउ
जेतले प्लैनेट माने मूव करछथि तांको केस सेंट्रीपिटल फोर्स टी एक्चुअली कोन थाए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट ड्यू टू सन थाए कार्ड टी जेतले सर्कुलर टर्न नो थाए से क्षेत्र रे सेंट्रीपिटल फोर्स टी इनडायरेक्टली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थाए. In physics we can classify quantities as scalars or vectors किछि टाइम आगरो हमें डिस्कस करथले. ओके स्केलर क्वांटिटी माने केवल मैग्नीट्यूड किंतु वेक्टर माने हमें कोन जानि थले इट इज मैग्नीट्यूड along with the direction. अच्छा a vector quantity is a quantity that has both a magnitude and a direction and obeys the triangle law of addition or equivalently the parallelogram law of addition. जेतु न्यूमेरिकल पोर्शन हमरो दरकार ही नहीं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन विषय जानिबा हमरो दरकार नहीं खाली डिफरेंस जानो स्केलर और वेक्टर भीतर डिफरेंस कोन कि वेक्टर माने नंबर एंड इट्स डायरेक्शन. अच्छा सम फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ा कि वेक्टर्स होचते कोन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स. इडी डिफरेंस देखंतु. ओके क्लियरली देछि स्केलर और वेक्टर भीतर डिफरेंस कोन. प्रथम डिफरेंस देखंतु स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी रो केवल अछि कोन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नाही. वेक्टर क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड भी अछि डायरेक्शन मध्य अछि. अच्छा एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल. स्केलर क्वांटिटी गोटा वन डायमेंशनल किंतु वेक्टर क्वांटिटी कैन बी 1 2 or 3 dimensional. Third, any change in scalar quantity is the reflection of change in magnitude. Change in scalar quantity माने सदाले ता change in its magnitude. किंतु change in vector quantity दुईटा जगह होई पारे. आपण जदी डायरेक्शन रे चेंज करचंदी चाहले भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज करिवो. जदी डायरेक्शन न चेंज करिकिनी केवल मैग्नीट्यूड चेंज करचंदी ताहले भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज करिवो. जदी डायरेक्शन सहित मैग्नीट्यूड दुईटा जगह चेंज करचंदी ताहले भी आपनकर वेक्टर क्वांटिटी चेंज हबो. Scalar quantity cannot be resolved as it has exactly same value regardless of direction. Vector quantity can be resolved in any direction using the sine or cosine of adjacent angles. Okay. Now, any mathematical operation is जो mathematical portion पार्ट पड़ा एड़ा को हमें कवर करिबा ना हमको एक जनरल आइडिया दरकार स्केलर और वेक्टर एड़ा unnecessarily और कंफ्यूजिंग करिवो. Okay. Now distance or displacement. Okay, distance माने कोन? It is the actual length of path. Okay, displacement माने कोन? It is the shortest distance covered by any body. Okay, for example एटा होची A एटा होची B. Okay, road होची एमटी A और B भीतर आपण जीवे रोड करे करे गले. ओके तो डिस्टेंस टा कोन पूरा ए जो रोड एटा ही आपनकर डिस्टेंस किंतु डिस्प्लेसमेंट माने कोन ए और बी भीतर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आपण डिस्प्लेसमेंट बोली किनी कहबे. तो सेटा डिफरेंस देछि कि कोन एक्चुअल लेंथ होछि पाथ रो डिस्टेंस किंतु शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होछि कोन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस टी सदा बेले पॉजिटिव थाए किंतु डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हे पारे नेगेटिव भी हे पारे जीरो भी हे पारे. ओके नाउ जीरो केमती हे पारे इन आपण ए पॉइंट रु स्टार्ट कले बुली 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 पुणी ए माने आपण घरे आसिकिनी पहुंची डिस्टेंस देखिया गले आपण कवर कले एठू पूरा एमती आसी एते डिस्टेंस कवर कले किंतु डिस्प्लेसमेंट कोन ए रु ही ए को पुणी आसिले फाइनल पॉइंट भी एटा आपण स्टार्टिंग पॉइंट भी एटा ता माने आपण किछि डिस्प्लेसमेंट करि नाते डिस्प्लेसमेंट होची जीरो. तो डिस्टेंस आपणकर सदा बेले पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे जीरो हे पारे. डिस्टेंस होची गोटे स्केलर क्वांटिटी किंतु डिस्प्लेसमेंट होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा डिस्टेंस होची कोन डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. सदाळे मन रखिबे डिस्टेंस ता सदा बेले डिस्प्लेसमेंट सहित ठरू बड़ किंबा इक्वल मध्य हेई पारे. ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट ता सदाळे डिस्टेंस ठरू कम किंबा इक्वल ही रहिबो. अच्छा स्पीड और वेलोसिटी भीतर डिफरेंस देखिबा. Speed or velocity. Speed obviously got a scalar quantity. Vector on the other hand is a vector. Velocity on the other hand is a vector quantity. Okay. Speed होची distance by time taken. Velocity किंतु होची displacement by time taken. Now speed only and only positive हे पारिबो. Velocity किंतु positive हे पारिबो negative हे पारिबो और okay it has either positive
or negative values. Okay, kintu speed will always be in your positive side. Acha, same speed or velocity continue heiche. The numerical value of the area under the curve of a speed time graph is equal to the total distance covered by the body. ना एटा ग्राफ हिसाब रे देइछे कि आपण यदि ग्राफ रे स्पीड और टाइम भितर डायमेंशन क्रिएट करूछंती ग्राफ करूछंती ताले आपण देखिबे जो एरिया टी कवर होची से ग्राफ अंडर रे सेटा होची डिस्टेंस. अच्छा, वेलोसिटी और टाइम भितर करले जोटा एरिया टा आपण करबो डिस्प्लेसमेंट. अगेन न्यूमेरिकल पोर्शन. नेक्स्ट देइछे the gradient of a distance time. अच्छा, यदि distance time graph करूचंती ताले तार gradient टी होची speed, किंतु यदि displacement time graph करूचंती ताले तार gradient टी होची कोन velocity. एटा ग्राफ हिसाब रे एटा जाको स्टेटमेंट देइछि. ना projectile motion. ओके, ना projectile motion एठी पिक्चर टी देखो. projectile motion माने कोन आपण देखि पड़थबे कोट ना कोठी गोटे inverted u shaped ओके हेजे आपनकर motion टी. Okay, so an object that is in flight after being thrown or projected is called a projectile. Such a projectile might be a football, a cricket ball, a baseball or any other object. Cricket देखुथिबे कि सेठी प्राय projectile motion थाय तो बैट्समैन बॉल टी को थ्रो करे माने बाड़ हिट करे तो सेतळे कोन हुए projectile motion रे बॉल टी जाय. अच्छा, the motion of a projectile may be thought of as the result of two separate simultaneously occurring components of motion. Okay, ए जो मोशन टी हुए अपन देखि पड़थबे एटा एम क्या होची. ओके, ए जो मोशन रो दुईटा कंपोनेंट थाए. दुईटा कंपोनेंट माने कोन गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गोटे होची कोन वर्टिकल कंपोनेंट. वन कंपोनेंट इज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन. माने रखंतु ए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी हुए आदरे कौनसी प्रकार एक्सेलरेशन काम करे नहीं. माने इट इज रिगार्डेड कि आपरे कौनसी प्रकार फोर्स एक्ट करे नहीं. किंतु जोटा वर्टिकल डायरेक्शन रे जो कंपोनेंट टी थाए वर्टिकल डायरेक्शन रे आ ऊपरे ग्रेविटेशनल फोर्स को अज्यूम करा जाए कि ग्रेविटेशन पडुची और सेति पई कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंडर रे काम करे बोली कि वर्टिकल कंपोनेंट को निया जाए. We shall assume that the air resistance has negligible. प्राय तो जतले कैलकुलेशन करिका करा जाय पैराबोलिक मोशन रे सेतले प्राय एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल बोली कि निया जाय, बट एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट. अच्छा, सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ वेलोसिटी v naught that makes an angle theta naught with the x axis. After the object has been projected, the acceleration acting on it is that due to gravity which is directed vertically downwards. अच्छा, आपण देखिबे एठी जो वेलोसिटी रे जाउची एठी से समान वेलोसिटी न थाए. ओके, वेलोसिटी ए जो इनिशियल वेलोसिटी आपण थ्रो करले आ एठी फाइनल वेलोसिटी जो पहुंचबा आ भीतर बहुत डिफरेंस थाए. सेकंड जिंस होची ए जो वेलोसिटी रे चेंज ना हमें जानि छे वेलोसिटी रे चेंज माने वेलोसिटी रे चेंज कहा जगु होई परिबो फोर्स आनले ही परिबो. फोर्स माने हमें कहूचे जे एक्सेलरेशन. अच्छा, किंतु ए क्षेत्र रे जो फोर्स टी काम करे चेंज इन वेलोसिटी हबारे सेटा होची आपनकर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो ही आपण इनिशियली जो स्पीड रे थ्रो करूचंती तले बॉडी टी पडुची सेही सेम स्पीड रे पडु नाही. देयर इज अ चेंज. ओके, तो मन रखंतु एठी गोटे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे. आपण जानिथबे कि ग्रेविटेशनल फोर्स टी सदा बेले वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड ही काम करे. तेनु एटा वेलोसिटी रो केवल वर्टिकल कंपोनेंट को ही अफेक्ट करे. The path of the projectile is a parabola. ए जो पाथ टा को प्रोजेक्टाइल मोशन रो पाथ को कोन कहवा जाय पैराबोला बोली कि नहीं कहवा जाय. ओके, आपण सुनिथिबे ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल्स. ओके, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्षेत्र रे एटा आपण जानिथिबे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर नोन फॉर देयर पैराबोलिक मोशन. ता जानिथा जे कोनोसी मिसाइल जदी तारो जो जगह रो ताकू फॉर एग्जांपल छड़ा हला ता पर जदी से प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ गोटे नोची ताले ताको हमें बैलिस्टिक मिसाइल बोली कि नहीं कहिबा. नेक्स्ट, circular motion. When an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. अच्छा, uniform circular motion माने कौन मैं आपको गोटे आइडिया दूचे. What is the meaning of uniform circular motion? अच्छा, एक तो जानिले कि सर्कुलर जे मूव करूचे किंतु इंपोर्टेंट क्राइटेरिया होची
एठी स्पीड टी कांस्टेंट थाए स्पीड आपनकर चेंज होना थाए स्पीड कांस्टेंट हुए किंतु वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज होता है वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंजेस अच्छा एमती केमती हला कि स्पीड कांस्टेंट अछि किंतु वेलोसिटी केमती कारण स्पीड माने भी से एका जिंस किंतु वेलोसिटी माने भी से एका जिंस बट डायरेक्शन तो ये देखंतु एई जगह फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट अछि से जाउची 5 किलोमीटर पर आवर रे ओके आ फॉर एग्जांपल से मूव करची एई डायरेक्शन ओके एटा होची तार डायरेक्शन ना एई जगह रे अच्छा मास को नियंतो सेही समान जिंसटी अछि जाउची तो सेही 5 किलोमीटर आवर रो किंतु डायरेक्शन देखो तो एपट को एई डायरेक्शन ता एपट को थिला ए डायरेक्शन ता एपट को अछि ता माने डायरेक्शन भी कांस्टेंटली चेंज होची ना आपण जानि चंती जे वेलोसिटी रो गोटे को भी वेक्टर क्वांटिटी रो कोन होची आपण यदि मैग्नीट्यूड न चेंज करी डायरेक्शन भी चेंज करछन्ते ताहाले भी चेंजेस होची तो स्पीड जदि एठी कांस्टेंट अछि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रे वेलोसिटी किंतु कांस्टेंटली चेंज हो अछि ओके तो ए जिंसटी बुझियला ओके ना जेहेतु कांस्टेंटली वेलोसिटी चेंज होची ता माने बाय डिफॉल्ट चेंज इन वेलोसिटी होची कोन एक्सेलरेशन ता माने आपण बाय डिफॉल्ट ए पूरा मोशन रे पाइबे कोन गोटे एक्सेलरेशन पाइबे अच्छा the acceleration of an object in uniform circular motion is always directed towards the center एटा मन रखता तो जो एक्सेलरेशन होची ए एक्सेलरेशन रो डायरेक्शन ता सदा बळे टुवर्ड्स द सेंटर ही थाए ओके ना टुवर्ड्स द सेंटर बोली किनी आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोली किनी मध्य कुआ जाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन now in physics work is equal to the product of force and displacement in the direction of the force अच्छा physics रे work होची force into displacement और डायरेक्शन वर्क रो कोटा force रो डायरेक्शन जहा वर्क रो डायरेक्शन मध्य सेया the work done by the force is defined as the product of component of force in the direction of the displacement and the magnitude of its displacement अच्छा now आपण जानि थिबे कि वर्क आउ एनर्जी दे आर काइंड ऑफ सिमिलर ओके आमे जो जिंसटी वर्क हिसाब रे दोचे सेटा ही एनर्जी को कन्वर्ट होची बा जो एनर्जी ता में दोचे सेटा ही वर्क हिसाब रे कन्वर्ट होची तमे एटा कहि पारबा कि वर्क एंड एनर्जी दे आर ऑफन interrelated to each other now when I say energy I am specifically talking about kinetic energy तो एटोटे जिंस देखंतु the principle of work and kinetic energy also known as the work energy theorem states that work done by is the sum of all forces acting on a particle equal to the change in the kinetic energy so that मन रखबे work is equal to change in kinetic energy okay kinetic गोटे जिंसर एनर्जी रे चेंजेस कहा ऊपर डिपेंड करछि ता ऊपर केति वर्क डन हला ता ऊपर डिपेंड करूछि नो वर्क इज डन केतबळे आपण कहिबे कि वर्क हेनी फिजिक्स हिसाब ओके फिजिक्स हिसाब रे केतबळे आपण कहिबे कि वर्क डन इज जीरो कि वर्क टोटली हेई नाही बोली किनी तो देला कोन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज सीन इन द एग्जांपल एबव जदी आपनकर डिस्प्लेसमेंट होउनी जिंसटी मूव करू नाही बा जिंसटी मूव करी किनी फुनी समान जगह को आसी जाउची जेंति कि हमें डिस्कस करिथिले डिस्प्लेसमेंट जीरो क्षेत्रटा तो एमितिया केस रे वर्क डन आपण कोन कहिबे जीरो कहिबे ओके एग्जांपल भी देइछेटी अ वेट लिफ्टर होल्डिंग अ 150 kg mass steadily on his shoulders for 30 seconds does not work on the load during this time okay वेट लिफ्टिंग देखिते हुए ओके तादरे कोन हुए आपण गोटे सर्टेन मास सर्टेन वेट रो जिंस उठेबार थाए ताकू धरिबार थाए किछ टाइम पर्यंत सेमिति भाबला बेलको आम नॉर्मल वे रे आमे कहबा बहुत काम जणे करूची किंतु फिजिक्स हिसाब रे नो वर्क हैज बीन डन कारण किछि भी डिस्प्लेसमेंट हो नाही से जिंसटी सेही गोटिए पॉइंट रे एग्जिस्ट करिछ सेकंड केतळ कहबो नो वर्क इज डन जति फोर्स जीरो ओके आमे देखिले फर्स्ट केस रे डिस्प्लेसमेंट जीरो थिले नो वर्क अच्छा फोर्स जीरो थिले भी नो वर्क ता माने कोन जदि फोर्स ही अप्लाई करू नांती टोटली आपण तो काम ही कोठी हबो तो सेही हिसाब रे जीरो अच्छा डिस्प्लेसमेंट जीरो रो आ गोटे मु कोची अलमीरा अछि बा कांथ अछि आपण कांथ को बहुत जोरे पुश करूचंती फोर्स दोउचंती किंतु डिस्प्लेसमेंट होनी ता माने से जगह रे भी वर्क डन इज इक्वल टू जीरो अच्छा थर्ड केस कोन देछि जदि आपनकर फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर अच्छा माने फोर्स आपण दोचंती ए डायरेक्शन रे ऑब्जेक्ट को किंतु डिस्प्लेसमेंट ता होची ए डायरेक्शन रे डिस्प्लेस ए जगह रे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भीतर 90 डिग्री एंगल अछि माने दे आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जदि आपण देखिबे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निज निज को म्यूचुअली परपेंडिकुलर से क्षेत्र रे मध्य वर्क डन हो जाए 0। वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एटा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट मन रखतंतु। वर्क पॉजिटिव हे पारे, नेगेटिव हे पारे, जीरो मध्य हे पारे। जीरो को केस रे हमें डिस्कस करले। अच्छा, केतबेले पॉजिटिव होबो वर्क टी, केतबेले नेगेटिव होबो। जदि थीटा थीटा होची एटी कोन कहले, थीटा होची आपनकर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भीतर रो एंगल। जदि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भीतर रो एंगल टा 0 डिग्री रु 90 डिग्री अछि, 0 डिग्री रु 90 डिग्री, ताले cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव माने वर्क डन इज पॉजिटिव। किंतु जदि आपनकर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भीतर रो जो एंगल अछि सेटा 90 डिग्री रु 180 डिग्री भीतर अछि, ताले cos थीटा इज नेगेटिव बा कहि परिबे वर्क इज। In many examples, the frictional force opposes displacement. Theta is equal to 180 degree. Then the work done by friction is negative. So, मन रखु friction रो work T सदा बड़े negative है। अच्छा, work and energy have the same dimension. Work और energy रो same dimension था। इट देखि पड़ते m L2 लिखाई छे, इट एक्चुअली होची m L to the power 2 T to the power minus 2। वर्क रो जहाँ डायमेंशन, एनर्जी रो भी सही डायमेंशन। द एसआई यूनिट ऑफ दिस इज जूल, नेम्ड आफ्टर द फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। अच्छा, कौन कौन आपनकर अलगा अलगा सब यूनिट्स अछि। प्रथम देछि अर्थ 10 to the power minus 7 जूल, बहुत छोट आपनकर एनर्जी मेजरमेंट पाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताठर भी छोट मेजर करा पाई 1.6 into 10 to the power minus जूल। कैलोरी होची केते 4.186 जूल और किलोवाट आवर होची केते 3.6 10 to the power 6 जूल। काम अलग अलग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्पेसिफिकली आपनकर सबएटॉमिक पार्टिकल्स मानकर एनर्जी मेजर करबा रे यूज हुए। अच्छा, कैलोरी ऑन द अदर हैंड जानिथिबे फूड इनटेक रो एनर्जी हमरो मेजर हुए। किलोवाट आवर ऑन द अदर हैंड हमर जो इलेक्ट्रिक मीटर बिल सिस्टम जोटा अछि तादरा में किलोवाट आवर यूज करूचे। Okay. If an object of mass m has velocity v, its kinetic energy is equal to half into mass into velocity বা half mv square जाबो कोनते। एटा होची kinetic energy। अच्छा, एडी गोटे पॉइंट देखंतु, kinetic energy is a scalar quantity। kinetic energy होची गोटे scalar quantity। The kinetic energy of an object is the measure of the work an object can do by the virtue of its motion। किसी टाइम आगु हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, हमें कौन पढ़ले कि वर्क ओके कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए वर्क को। ओके, तो आपण कहि परिबे कि दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क एंड ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द virtue of its motion। पोटेंशियल एनर्जी कौन? Potential energy is the energy held by an object because of its position relative to other objects। other objects हिसाब रे से ऑब्जेक्ट रो पोजीशन कोठी अछि से हिसाब रे हमें पोटेंशियल एनर्जी जानि परिबा। कॉमन टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होची कोन आपनकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डिफॉर्म्ड स्प्रिंग and the electric potential energy of an electric charge and electric field। माने आपण कहि परिबे पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप रो अछि। अच्छा, the unit for energy in the international system is joule। SI यूनिट एनर्जी रो होची कोन? जूल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भीतर रो डिफरेंस कोन? प्रथमे देखंतु, एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। मोशन रे थिले ही काइनेटिक एनर्जी अछि, रेस्ट थिले किंतु एनर्जी टी होची कोन? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी टी ट्रांसफरेबल, हमें पर देखिले ना काइनेटिक एनर्जी वर्क को कन्वर्ट हे परिबो। ओके, बट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफरेबल। थर्ड, मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड मास। ओके, पोटेंशियल एनर्जी किंतु हाइट और मास। ओके, नॉर्मली जदि मु कहबे फार्मूला एठी त हमें देखि देले हाफ mv स्क्वायर मास वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करछि, जेबे कि पोटेंशियल एनर्जी रहउछि कोन? mgh मास इनटू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ ता सहित केते हाइट रे अछि। फोर्थ रे
It changes according to the change in speed. Speed change कले kinetic energy change होबो. Potential energy रो speed सहित किछि relation नहीं. Position change कले जाय कि potential energy रे changes आसीबो. अच्छा. Kinetic energy रो symbol K, potential energy रो symbol होची U. अच्छा. Kinetic energy रो example होची गोटे moving car, flowing river. Earth's rotations are some example. Similarly, branch of tree, stressed rubber are examples of potential energy. Power kono. Okay, power ta gote important factor. What is power? Power, often it is interesting to know that only the work done on an object, but also the rate at which this work is done. बेले बेले आमे जानिया को चाहू कि गोटे टाइम यूनिट गोटे सेकेंड रे फॉर एग्जांपल गोटे जिंस केते काम कला. ओके, जब आपण टाइम सहित कंपेयर करछते काम को सेतल से जिंस टी हेगला आपण पावर. We say a person is physically fit if he not only climbs 4 floors of a building but climbs them fast. Power is defined as the time rate at which work is done or energy is transferred. The average power of a force is defined as the ratio of work to the total time taken. So power माने कौन? Work by time. Power like work and energy is a scalar quantity. एटा मन रखि थांतो. Power मध्य गोटे scalar quantity. In the SI, its unit is called watt. So the scalar quantity unit होची watt. The watt is 1 joule per second. The unit of power is named after James Watt, one of the innovators of the steam engine in the 18th century. अच्छा, power रो खाली दरकार नहीं 1 joule per second ही अच्छी, आउ गोटे बा watt ही अच्छी, आउ गोटे unit होची 1 horsepower. 1 horsepower is equal to 746 watt, जोटा कि बड़ा बड़ा ऑटोमोबाइल्स, मोटरबाइक्स, मशीन्स केस रही मेनली यूज हुए. Kepler's law. Kepler's law कौन? Kepler's law are related to the motion of the planets, okay, around a sun. तो ये केस देखिए बात 3 laws of Kepler can be stated as follows. Kepler's तोरा तीनिटा law अच्छी ते तीनटा law कौन? प्रथम होची law of orbit. Law of orbit माने कौन? सब planet गोटे elliptical orbit रे move करंती around the sun. के को type orbit? Elliptical orbit. Next होची law of areas. The line that joins any planet to the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. This law comes from the observation that planets appear to move slower when they are farther from the sun than when they are nearer. Okay. एटी कौन जानले? For example, एटा elliptical orbit अछि, एटी अछि sun, एटी अछि planet. Okay. तो आपण देखिबे, okay, for example 0 सेकेंड रे प्लैनेट टी एठी थिला, आपण स्टॉप वॉच ऑन करले, ओके, बस 0 टाइम बेलको एठी थिला, आपण 1 आवर पर देखिले आपण को प्लैनेट टी एठी अछि. ओके, 0 1 माने 1 आवर रो इंटरवल रे आपण को प्लैनेट रो एरिया केति चेंज हेछि विथ रिस्पेक्ट टू सन, एति की एरिया चेंज हेछि ना. आपण आउ देन रे फॉर एग्जांपल सेतळे प्लैनेट टी एठी थिला, आ सेतबळे भी आपण 0 रो नेगिनी 1 आवर ड्यूरेशन देखिले, और 0 ରୁ 1 आवर ड्यूरेशन भितर अगेन देखिले केते एरिया ये प्लैनेट टी बनौछि सन कंपैरिजन रे. आपण देखिबे जे जदी टाइम सेम थिबो ताले ए जो एरिया जोटा बना होछि सेटा मध्य सेम रहइबो. एक क्षेत्र रे 1 आवर नेले, एक क्षेत्र रे भी 1 आवर नेले, एठी जेति की एरिया बनेबो प्लैनेट टी सन सहित, एठी मध्य प्लैनेट टी सन सहित सेति की एरिया ही बनेबो. एटा होछि लॉ ऑफ एरियाज. नाउ लॉ ऑफ पीरियड्स. The square of the time period of revolution of a planet is proportional to the cube of semi-major axis of the eclipse. अपन जानते हो eclipse रो गोटे semi-major axis था, और गोटे minor axis था. तो eclipse रो जो semi-major axis था, ओके, तारो cube आउ जति के time period लागे revolution पाए तारो square निज निज सहित directly proportional थांती. आपको law of periods कहती. ओके, gravitational force माने कौन? Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. दुईटा जिनस फॉर एग्जांपल अछंती, एटा रोचे mass 1, एटा रोचे mass 2, आंक भितर डिस्टेंस टी फॉर एग्जांपल होची r. तो सीआईडी कोन कहला कि एई जो दीटा जाको बॉडी m1 और m2 भितरे गोटे अट्रैक्टिव फोर्स काम करिवो,
जो अट्रैक्टिव फोर्स टाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिबो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस माने m1 into m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस होची r, ओके r स्क्वायर, ओके रु इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दीटा जाक बॉडी, दुईटा बॉडी एक्जिस्ट करूचंती तो ताको भीतर अट्रैक्टिव फोर्स इज directly proportional to the product of the mass, okay, mass of the two object and inversely proportional to the distance between them. Now a attractive force ta को ही आमे gravitational force बोली किनी कहू। gravitational constant कौन एठी देइछि, okay, what is gravitational constant? The value of gravitational constant g entering the universal law of gravitation can be determined experimentally. Leave that, खाली एतिकी जानो कि gravitational constant रो value केते 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton per meter square per kg square. Unit मने रखिबे आ quantity मने रखिबे। अच्छा तबे मु जस्ट आगरो कहली कि gravitational force आपनकर होची केते is directly proportional to the mass of the two object divided by the distance between, square of the distance between them, okay. किंतु एटा को जदि गोटे फार्मूला रे कन्वर्ट करिवे तो फार्मूला टी एम्ति किछि आसीबो, G m1 gravitational force is equal to G m1 m2 by r square। एठी ए जो G टी होछि gravitational constant जा वैल्यू टा भी आपण देखिले 6.67 into 10 to the power minus 11 और यूनिट होछि कोन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square। अच्छा, the remarkable thing about acceleration due to Earth's gravity is that it is maximum on its surface, decreases whether you go up or down। एटा मने रखि थांतु, ओके। एटा हला अर्थ आपण एटी छिडाई चंते, ओके ना। जदि आपण अर्थ को खोली किनी तळु को गले बा एटमॉस्फेयर ऊपर को गले आपण देखिबे कि ग्रेविटेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हुए, ओके। एठी भी ग्रेविटेशन आपण चेंज हो, एठी भी ग्रेविटेशन ऊपर गले भी चेंज हो, किंतु सरफेस रे जेतले थिबे सेतबळर ग्रेविटेशन सबुठरो अधिक थिबो rather than when you go up बा rather than when you go down। सदाले मन रखिबे सरफेस रे सबुठरो अर्थ रो सरफेस रे सबुठरो अधिक अर्थ रो ग्रेविटी, मैक्सिमम अर्थ रो ग्रेविटी थाए। Next, escape speed कौन? If celestial mechanics escape velocity or escape speed is the minimum speed needed for an object to escape from contact with or orbit of a primary object। एटा अर्थ रो सरफेस रे आपण अछंती किछि बिंस तो थ्रो करछन आपण देखुबे कि सेटा तळो पळे आसुची, ओके। अच्छा, किंतु जदि मनिष द्वारा तो पॉसिबल नुहे। फॉर एग्जांपल एमतिया किछि ऑब्जेक्ट थांता जोटा कि बहुत ही हाई वेलोसिटी रे पिंगी थांता, वेलोसिटी इंक्रीज करूची तो देखिबो एमति आसी पुनी पडुची, एमति पडुची, किंतु गोटे सर्टेन वेलोसिटी परे आ से अर्थ ऊपर पडिबनी, अर्थ रो ऑर्बिट को ही छाडी किनी टोटली पळेबो। अच्छा, जो स्पीड रे आपण जिंसटी को फिंगिले जिंसटी टोटली अर्थ रो ऑर्बिट को छाडी पडुची माने ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करि दोची ताको आपण कहबे एज एस्केप स्पीड। अच्छा, यूजिंग द वैल्यू ऑफ g and r से देछि अर्थ रो एस्केप स्पीड मन रखंतु केते 11.2 km per second। this is called the escape speed, sometimes loosely called as the escape velocity। अच्छा, अर्थ सैटेलाइट्स कौन? अर्थ सैटेलाइट्स are objects which revolve around the earth। their motion is very similar to the motion of planets around the sun and hence Kepler's law of planetary motion are equally applicable to them, okay। In particular, their orbits around the earth are circular or elliptical। moon is the only natural satellite that आपको जाना अछि already, okay। now तापर देखिबा जियोस्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स कौन? एटा होची इंपोर्टेंट पार्ट कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन और पोलर सैटेलाइट्स कौन। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट गुड़ा अर्थ को ऑर्बिट करती गोटे सर्कुलर ऑर्बिट रे अराउंड द इक्वेटर एट अ फिक्स्ड लॉन्गिट्यूड, ओके। इक्वेटर चारि करे किंतु गोटे फिक्स्ड लॉन्गिट्यूड, ओके। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हिसाब रे मीनिंग तमे जानिथबो, ओके। around the equator at a fixed longitude, okay, appearing stationary from Earth's surface।
Okay. The satellite's orbit is concentric and co-planar with the Earth's equatorial plane, and it moves in the same direction as the Earth's rotation at a speed equal to Earth. अर्थ जो डायरेक्शन रे रोटेट करूची जियोस्टेशनरी प्लैनेट्स माने सेही डायरेक्शन रे मूव करंती प्लस अर्थ रो रोटेशन रो स्पीड जहा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स मानकर भी स्पीड सेतिकी ही थाए. अच्छा आज को कौन हुए दिस अलाउज द सैटेलाइट टू मेंटेन इट्स पोजीशन ओवर अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन. आज को सैटेलाइट टे सदा बेले गोटे ही स्पेसिफिक रीजन ऊपर नजर रखी पारे आ से जगाटीर कंटीन्यूअस कवरेज दे पारे ओवर द टाइम. Clearly, since the Earth rotates with the same period, the satellite would appear fixed from any point on the Earth. अच्छा जदि अर्थ रो कौन से पॉइंट रो आपण से सैटेलाइट को ऑब्जर्व करूचंती ताले आपण को एमती लागबो कि से सैटेलाइट मूव ही करूनी कारण रिलेटिव मोशन जीरो अर्थ जो स्पीड रे मूव करछि से भी सही स्पीड रे मूव करछि तो हमको एमती लागबो जेन से गोटे जगह रे स्टक अछि वा फिक्स्ड अछि. It takes very powerful rockets to throw up a satellite to such large heights above the Earth, but this has been done in view of several benefits of many practical applications. अच्छा another class of satellites होची कोन polar satellites. इगड़ा low altitude थांती but they go around the poles of the Earth in a north south direction. एमन around the poles move करंती whereas the Earth rotates around its axis in a east west direction. Since its time period is around 100 minutes, it crosses any altitude many times a day. अच्छा केते टाइम लागे गोटे पोलर सैटेलाइट को मूव करिया पे 100 मिनिट्स. ओके सेति पय कोन हुए इट क्रॉसेस एनी ऑल्टीट्यूड मेनी टाइम्स अ डे. However, since its height h above the earth is about 500 to 800 km, a camera fixed on it can view only small strips of the earth in one orbit. Adjacent strips are viewed in the next orbit so that in effect the whole earth can be viewed strip by strip. देखो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रे केवल गोटे जगह ऊपर नजर दे पारिबे किंतु पोलर सैटेलाइट स्ट्रिप बाय स्ट्रिप पूरा अर्थ रो एरियाज को कवर करे. Adjacent strips are viewed in the next orbit so that in effect the whole earth can be viewed strip by strip during the entire day. The satellite can view polar and equatorial regions at close distances with good resolution. Information gathered from such satellites is useful. Now polar satellites are useful को क्षेत्र रे थांती remote sensing, meteorological as well as environmental studies case रे polar satellites are very important. Weightlessness माने कोन? When an object is in free fall, it is weightless, and this phenomenon is usually called the phenomenon of weightlessness. Weightlessness is the complete or near complete absence of sensation of weight. कौन से लोक को जिते तार ओजन रो सेंसेशन आउ रहू नहीं ताको कह जाए वेटलेसनेस. ओके ओजन रो सेंसेशन आउ रहू नहीं. अच्छा माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट इज मोर और लेस सिनोनिमस इन इट्स इफेक्ट with the recognition that gravitational forces can never exactly be zero. अच्छा weightlessness particularly अपन जानिथिबे स्पेस घरिकारे प्राय weightlessness situation है. एट देखो को केस रे आपण वेटलेसनेस रो केस देखिबे माने ओजन आपण को निज ओजन आपण को फील होबनी को केस रे फ्री फॉलिंग एलिवेटर. ओके गोटे लिफ्ट जदि पडुची तळको फ्री फॉल करूची द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो सो द वेट ऑफ एनीथिंग इनसाइड इज आल्सो जीरो. एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप तांको वेटलेस फील हुए. अम्यूजमेंट पार्क राइड आपण देखिथिबे अम्यूजमेंट पार्क रे जो एमती हेकिनी आपणकर जो राइड गोडा थाए से केस रे भी जण को weightlessness ro feel हुए. Geostationary satellite, because its orbit the earth at the same speed, a geostationary satellite has zero relative velocity earth, so people inside don't feel gravity. Okay जे geostationary satellite for example यदि लोक रहिबे तो तांको भी weightlessness रो feel हबो. Person sitting in a chair in a satellite, the normal force of the chair makes a person sitting in it feels weightless in addition to the gravitational force. एबे देखिबा waves. अच्छा waves कौन पाई हुए कौन हुए सेटा टिके हमें एबे देखिबा. ओके स्टार्ट करिबा waves रो. Patterns which move without the actual physical transfer or flow of matter as a whole are called waves. Wave transport energy and the pattern of disturbance has information that propagate from one point to another.
जिते भी हमारा कम्युनिकेशंस अच्छे सब डिपेंड करे सिग्नल्स ऊपर जोड़ा कि एक्चुअली होचंदी कोन वेव स्पीच मीन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर एंड हियरिंग माने कोन जेतला हमें से सिग्नल को एक्सेप्ट करूचे ओके नाउ ऑफन कम्युनिकेशन ओके ऑफन जो कम्युनिकेशन सिस्टम था इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स फॉर एग्जांपल sound waves may be first converted into an electric current signal which in turn may generate an electromagnetic wave that may be transmitted by an optical fiber or via satellite माने कोन different kind of communication passes पई आपन को different kind of waves दरकार पड़े जेंति कि आपन दि बाय टेलीफोन कथा होचंदी आपन को साउंड वेव ता प्रथम इलेक्ट्रिकल वेव को कन्वर्ट होबो देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फाइनली सेटा अगेन साउंड वेव हिसाब रे रिसीव होबो आर एंड रे सबू वेव्स को मीडियम दरकार न थाए ओके मन रखंतु वेव्स रे किछिटा वेव को गोटे मीडियम दरकार मीडियम माने कोन सॉलिड लिक्विड गैस किछोटे मीडियम दरकार ओके ट्रैवल करिया पई किंतु किछिटा एमते जिंस वेव्स अछंती जो माने को टोटली मीडियम दरकार नहीं मीडियम दरकार नहीं माने कोन वैक्यूम हेले मध्य से माने ट्रैवल करि पारिबे तो से दिछि नॉट ऑल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन We know that light waves can travel through vacuum. The light emitted by stars, which are hundreds of light years away, reaches us through interstellar space, which is practically a vacuum. Okay, light गोटे सबुठु बड़ एग्जांपल जोटा कि वैक्यूम थिले मध्य हमको आसी पहुंची पारुची तो it does not need a medium. The most familiar type of waves such as waves on string, water waves, sound waves, seismic waves are called mechanical waves. मेकानिकल वेव्स कौन जो वेव्स मानू गोटे मीडियम दरकार ओके आमे देखले लाइट को मीडियम दरकार नहीं किंतु जो वेव्स मानू गोटे मीडियम दरकार तांको कौन कहा जाए मेकानिकल वेव्स एग्जांपल दीजिए वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग वाटर वेव्स साउंड वेव्स और सेस्मिक माने अर्थक्वेक वेव्स ओके ये सब जगह ये सब गुड़ा होची कौन आपन मेकानिकल वेव्स दे नीड अ मीडियम जदि वैक्यूम हम तो मैंने आउ ट्रैवल करि परिबे नहीं अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सी वेव्स जो मानको कि कोनोसी मीडियम दरकार नहीं जोटा कि लाइट रो एग्जांपल हमें देखिले लाइट हे गला रेडियो वेव्स हे गला एक्सरे हे गला एमान को ट्रैवल करिया पई कोनोसी प्रकार कोन दरकार नहीं मीडियम दरकार नहीं माने वैक्यूम रे भी ट्रैवल करि परिबे देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स a third kind of wave is called matter waves okay थर्ड काइंड ऑफ वेव होचे आपनकर कोन मैटर वेव्स कहा सहित रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एटम्स ओके जेतेबेले आपनकर जो वेव टी होची सेटा बहुत सब एटॉमिक लेवल रे होची माने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेवल रे होची तेबे जाय कि आपन ताको मैटर वेव्स बोली कि कहिबे Now we have seen that motion of mechanical waves involve oscillation of constituents of the medium अच्छा जो वेव टी केतेबेले हुए वेव माने कोन आदरे ये जो वेव रे जो पार्टिकल थांती ए माने कांस्टेंटली ऑसिलेट करथांती गोटे पोजीशन रो आरो पोजीशन को टू एंड फ्रो मोशन करूथांती अच्छा तो दीटा जिंस आपण बेले बेले देखिबे आपण बेले बेले देखिबे वेव रो जो डायरेक्शन टी थाए ओके वेव रो जो डायरेक्शन टी थाए बेले बेले देखिबे वेव रो किंतु जो पार्टिकल्स ओडा मीडियम्स ओडा सीए ताटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे वाइब्रेट होचंती ओके देखो तो वेव रो डायरेक्शन याड को जाउची किंतु तांकर मूवमेंट ता कोन रोची परपेंडिकुलर रोची इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एमितिया वेव को आपण कोन कहबे ट्रांसवर्स वेव कहबे ट्रांसवर्स वेव किंतु फॉर एग्जांपल एटा होची आपनकर वेव रो डायरेक्शन एथिरे थिबा पार्टिकल आपण देखुचंती एई डायरेक्शन रे ही आपनकर टू एंड फ्रो करचंती ए डायरेक्शन रे वाइब्रेट करछन माने जो डायरेक्शन रे आपनकर वेव टी चली छि सेही समान पैरेलल टू देम ही से माने कोन करछंती ऑसिलेट होचंती तले ताकू कहबे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स तो सेपय कोन दला देखंतो जदि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ताले इट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव इफ दे ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव जो डायरेक्शन रे वेव जदि सेही डायरेक्शन रे मूव करले तले तांको कोहा जिवो एज व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल अच्छा एग्जांपल कोन आको तो देखिबा ट्रांसवर्स वेव रो एग्जांपल सरफेस रिपल्स ऑन वाटर सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओडा सब हो जने कोन ट्रांसवर्स माने कोन
एमानकर मीडियम आउ एमानकर डायरेक्शन निज निज सहित परपेंडिकुलर थाए ऑसिलेशन आउ डायरेक्शन परपेंडिकुलर थाए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स माने कोन समान डायरेक्शन रे ही ऑसिलेट करती एग्जांपल होची कोन साउंड वेव्स इन एयर प्राइमरी वेव्स अर्थक्वेक रो अल्ट्रासाउंड स्प्रिंग रो वाइब्रेशन गैस रो फ्लक्चुएशन सुनामी वेव्स ए सब गुड़ा होचदी आपनकर कोन ए सब गुड़ा होचदी लॉन्गिट्यूडिनल वेव अच्छा the minimum distance between two points having the same phase is called wavelength of the wave okay आपण जानी कि प्राय तो वेव को एमती साइनोसोडल मोशन रे हमें रिप्रेजेंट करू दीटा अच्छा एटी कोन देला द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जदी एमिति दीटा पॉइंट नौचंती जो दीटा पॉइंट करो सेम फेज अछि जदी कि एटी पॉइंट ए आउ पॉइंट बी रो सेम फेज अछि एटू भी वेव टी एमती जाउची ए जगह रे भी वेव टी एमती जाउची माने सेम ओरिएंटेशन सेम फेज अच्छा जदि दुईटा पॉइंट आपण नौचंती गोटे वेव रे ओके जो दुईटा पॉइंट रखी सेम फेज अछि तो ताको भितर थिबा मिनिमम डिस्टेंस ताको भितर थिबा मिनिमम डिस्टेंस टाको आमे वेवलेंथ ऑफ द वेव बोली किने कहू वेवलेंथ which is denoted by the symbol lambda. For simplicity, we can choose points on the same phase to be crests or troughs. Okay, the upper part of crest kwanti, lower part of the wave ko trough kwanti. The wavelength is then the distance between two consecutive crests or trough in a wave. Liquid and solids generally have higher speed of sound than in gases. Mone rakho साउंड रो स्पीड टा लिक्विड और सॉलिड्स रो अधिका थाए रादर देन इन गैस डॉपलर इफेक्ट कोन इट इज एन एवरीडे एक्सपीरियंस दैट द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन डिक्रीजेस एज इट रिसीड्स अवे अच्छा गोटे तो भाबंतु गोटे ट्रेन बहुत हाई स्पीड रे आसुची आपण स्टेशन रे बसी जानती ओके किंतु ट्रेन टी सेटे रहउनी पास कर जाउची स्टेशन को अच्छा जेतबेले जेते जेते पाखु को आपण आसुची आपण देखुतबे तार जो व्हिसल साउंड टा एमिट करूची सेटा आपण को आउरी जोर जोर सुबुची जेतबेले आपण को क्रॉस करी पळौची साउंड टी फुनी कमी कमी आसुची माने कोन relate distance okay distance between the source और distance between the receiver ऊपर depend करे गोटे wave रो frequency बा तारो pitch okay जंती कि sound रो frequency बा pitch depend करता है distance ऊपर अच्छा ए जो इफेक्ट ताको कुआ जाय as what doppler effect माने कोन केमिति गोटे wave रो frequency change हुए with a change in relative distance ताको कुआ जाय as doppler effect अच्छा डॉपलर इफेक्ट बहुत जगह आपण देखिबे कि डॉपलर इफेक्ट हमरो बहुत जगह रे यूज होची को केस रे यूज होची देखिबा प्रथमे द चेंज इन फ्रीक्वेंसी कॉज्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट is used to measure the velocity in diverse areas such as military particularly military medical science astrophysics case रे यूज होची it is also used by police to check overspeeding of vehicles vehicle टा overspeeding होची कि नहीं चेक करया पई डॉपलर इफेक्ट यूज हुए अच्छा it is used at airports रे यूज हुए to guide aircraft and in the military to detect enemy aircraft astrophysicists use it to measure the velocities of stars okay next doctors use it to study heartbeats doctors generally use करंती याकू कोन स्टडी करिया पई heartbeat study करिया पई and blood flow in different parts of the body here they use ultrasonic waves and in common practice it is called sonography ये जो sonography ना सुनी तो इतरे doppler effect use हुए अच्छा in case of heart सही टाइप रो गोटे प्रोसेस यूज हुए जाको कि इकोकार्डियोग्राम कहंती सेतिरे मध्य आपनकर डॉपलर इफेक्ट यूज होची साउंड होची गोटे मेकानिकल वेव आमे डिस्कस करले मेकानिकल वेव माने कोन जहा गोटे मीडियम दरकार एयर वाटर सॉलिड ओके फॉर इट्स प्रोपेगेशन इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आ गोटे जिन समझ जानले कि साउंड होची लॉन्गिट्यूडिनल वेव माने कोन तार मीडियम आ वेव रो डायरेक्शन निज निज सहित सेम ओके सेम डायरेक्शन पार्टिकल्स माने से डायरेक्शन रे ऑसिलेट करंती जो डायरेक्शन रे कि वेव टी मूव करूची speed of sound depends on the properties of the medium through which it travels okay it is sound ro speed ta depend करे से को मीडियम रो ट्रांसफर होची जेंति कि हम किछ टाइम हमरो पढिले कि सॉलिड लिक्विड रे स्पीड ऑफ साउंड अधिका थाए किंतु गैस रे कंपैरेटिवली कम थाए the speed of sound in a medium depends on the temperature of the medium
टेम्परेचर हिसाब रे मध्य स्पीड ऑफ साउंड चेंज हुए ओके आम जो सॉलिड रू गैसियस स्टेट को जाओ से क्षेत्र में मध्य स्पीड चेंज हुए इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस ओके ठीक है भल से देखी दिंतु कौन कौन लिखाई कहा का ऊपर डिपेंड करे स्पीड ऑफ साउंड नेक्स्ट देखिबा sonic boom माने कौन ओके लेट अस सी व्हाट इज sonic boom गुड मिनट what is sonic boom when the speed of any object exceeds the speed of sound गोटे ऑब्जेक्ट मूव करुच्ची और से ऑब्जेक्ट जो मूव करुच्ची तार स्पीड टा साउंड रो स्पीड रो अधिक अच्छी इट इज सेड टू बी ट्रैवलिंग एट अ सुपरसोनिक स्पीड bullets jet aircrafts often travel at supersonic speeds when sound producing source move with a speed higher than that of sound it produces shock waves अच्छा जो जिनसटी मूव करुच्ची स्पीड ऑफ थ्रू भी जोरे से फॉर एग्जांपल गोटे साउंड बाहर कला ओके तो ए केस रे जो साउंड टी बाहर सेटा गोटे बूम ओके गोटे लार्ज और शार्प साउंड हिसाब से बाहर जहाँ कि सोनिक बूम बोली कहते हैं वेव्स गुड़ा शॉक वेव्स बोली कहते शॉक वेव्स गुड़ा एत पावरफुल था कि से ग्लास को चूना करें आउ बिल्डिंग्स गुड़ा भी डैमेज करें मन रखु सोनिक बूम बा शॉक वेव्स केतबेले रिलीज हेबे जेतबेले आपण देखिबे कि कौन सी जिनस मूव करुच्ची विथ अ स्पीड हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड ओके नॉट ओनली दैट आप यहाँ देखिए कि सी गोटे साउंड एमिट करुच्ची और से साउंड टा जो वेव रे मूव करे ताको कहते शॉक वेव्स और जो साउंड टी क्रिएट हुए ताको कह जाए से केस रे कोन सोनिक बूम नेक्स्ट What is the difference between echo and reverberation? Echo और reverberation भितर difference कौन? Okay. Echo माने आपण सुनी थिबे आपण फॉर एग्जांपल गोटे पहाड़िया जगह गले निजर ना जोरे चिलेले आपण को आपण ही वॉइस टी पुणी थरे सुभिला से वर्ड टी सेटा होची इको माने थरटे जदी सुभिला किंतु बेले बेले एटा भी मार्क करथिबे कि बेले बेले आपण गोटे थर कहले किंतु साउंड टी आपण को बारंबार सुभिला माने मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हला ताको कुआ जे कोन रिवर्बेशन इको माने वन टाइम रिफ्लेक्शन रिवर्बेशन माने मल्टीपल रिफ्लेक्शन अच्छा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रा यूजेस को जगह रे हुए स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप होचे गोटे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड विथ द बॉडी आपण जानि छथि स्टेथोस्कोप रे मोस्टली एई मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कांसेप्ट काम करे अच्छा नेक्स्ट अपन जनरली देखिबे कॉन्सर्ट हॉल्स मानकर सीलिंग कॉन्फ्रेंस हॉल मानकर सीलिंग बा सिनेमा हॉल्स मानकर सीलिंग गुड़ा टिके कर्व थाए कोन पाई कर्व थाए ताकि साउंड रिफ्लेक्शन होबा और सब कॉर्नर रे थिबा लोक मान को साउंड ठीक से सुबि पारिबो एटी नेक्स्ट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज जो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज रु कम ताको कहै जाय इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड ओके sound of frequencies below 20 hertz are called infrasonic sound or infrasound. If we could hear infrasound, we would hear the vibrations of a pendulum just as we hear the vibration of the wings of a bee. अच्छा किए सब को एनिमल infrasonic sound यूज करती rhinoceros communicate using infrasound whales and elephants माने भी infrasound produce करती it is observed that some animals get disturbed before earthquake. Earthquake produces low frequency infrasound before the main shock waves begin, which possibly alert the animals. Frequency higher than 20 kilohertz को हमें कहू as ultrasonic sound or ultrasound. Okay, mostly dolphins, bats और porpoises ए टाइप रो साउंड रिलीज करती किछटा moths मध्य ultrasonic sound रिलीज करती okay तो ये जानी पारलो अच्छा rats also play games by producing ultrasounds. Ultrasounds are used extensively in industries and for medical purposes. Ultrasound is generally used to clean parts located in hard to reach places. कौन सी जिनस छोट सूक्ष्म जिनस अच्छी कि बहुत दूर में अच्छे तेणु आप सफा कर तो से केस अल्ट्रासाउंड यूज हो पार टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रिच प्लेसेस. सेकेंड ultrasounds use to detect cracks and flaws in metal blocks.
कौन सी प्रकार स्ट्रक्चर अच्छी मेटल ब्लॉक अच्छी ताते क्रैक हेछि कि नाही किछि फॉल्ट अच्छी कि नाही ताकू जानिया पे मद्र अल्ट्रासाउंड यूज हे परिबो। Ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and form the image of the heart. This technique is called echocardiography. अच्छा हम echocardiography देखथिले echocardiography रे ultrasonic waves use होची किंतु को इफेक्ट यूज होची हम डिस्कस करथिले को इफेक्ट यूज होची Doppler effect use होची ए जगह रे। अच्छा ultrasonic scanner is an instrument which uses ultrasonic waves for getting images of internal organs of the human body. अपन ultrasound test विषय सुनी थी already। अच्छा सोनार कौन एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार गोटे एमतिया डिवाइस जोटा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करे टू मेजर डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। तबे सोनार काम केमती करे सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर। ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करे ओके और ट्रांसमिट करे अल्ट्रासोनिक साउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ए वेव्स गड़ा ट्रैवल करंती वाटर रे ओके मन रखंतु सोनारटा वाटर रे ही यूज हुए। अच्छा आ वाटर रे किछि ऑब्जेक्ट स्ट्राइक हला परे ए अल्ट्रासोनिक वेव्स गड़ा रिफ्लेक्ट बैक होंती जेटा कि डिटेक्टर मेजर करे। डिटेक्टर कन्वर्ट करे ए अल्ट्रासोनिक वेव्स को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स which are appropriately interpreted। एठू आपन को जाना पड़ी जाए कि सामना रे थिबा वाटर भीतर जो जिंसटी अछि सेटा आपन कोठू केते डिस्टेंस रे अछि को डायरेक्शन रे अछि कोन अछि आपन तारा डिटेल मिली पारे। The sonar technique is used to determine the depth of the sea and locate underwater hills, valleys, submarine, icebergs, sunken ships, etc. Refraction. Refraction कौन? When a beam of light encounters another transparent medium, a part of light gets reflected back into the first medium while the rest enters the other. बेले बेले आपण देखिबे जेतल गोटे मीडियम एटा ग्लास अछि एटा एटमॉस्फेयर बा एयर अछि ओके आपण ए ग्लास स्लैब भितरु लाइट फॉर एग्जांपल जो ट्रांसमिट करबे आपण देखिबे किछि पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक करि जबो किंतु किछि पार्ट ऑफ लाइट बाहर को ट्रैवल करि जबो। ए किछि पार्ट ऑफ लाइट जोटा कि मीडियम 1 रु मीडियम 2 को एंटर करिवो ए प्रॉपर्टी टा को रिफ्रैक्शन बोली किनी कुहा जाय ओके। The direction of propagation of an obliquely incident ray of light that enters the other medium changes at the interface of the two medium. This phenomenon is called refraction of light। तो आपण कोन देखिले refraction of light माने जेतल गोटे लाइट बीम टे गोटे मीडियम को छाडी आउटे मीडियम को एंटर करि जिवो प्लस एट अ एंगल ओके। When light travels from an optically denser medium to a rarer medium at interface, it is partly reflected back into the same medium and partly refracted to the second medium. This reflection is called internal reflection। आमे कोन देखिले कि जेतल गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम लाइट जीवो लाइट रो किछिटा अंश भीतर को एमति रिफ्लेक्ट हे जिवो किछिटा अंश बाहर को जीवो जोटा बाहर को माने मीडियम 2 को पळेबो सेटा अछि रिफ्रैक्टेड लाइट किंतु ए जो पार्टटा जोटा भीतर रिफ्लेक्ट करि जिवो सेटा कोन रहउची सेही मीडियम भीतर ही रहउची तेणु ए टाइप रो रिफ्लेक्शन को कोन कहा जाय ताको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली किने कहा जाय। आगु को हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विषय पढ़िबा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विषय प्लीज कंफ्यूज हेबे नहीं। इंटरनल रिफ्लेक्शन माने कोन लाइट रो सर्टेन पार्ट जेतले सेही मीडियम भीतर को ही रिफ्लेक्ट करि आसे ततले ताको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली किने कहा जाय। ऑन द अदर हैंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोन total internal reflection in physics means complete reflection of a ray of light। माने एठी अपन लाइट छाडिले किछि रिफ्रैक्शन होनी सबुतिक लाइट ही जदी रिफ्लेक्ट बैक कर दोछि सेम मीडियम रे ताहले ताको आपण कहबे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंप्लीट रिफ्लेक्शन within a medium such as water or glass from the surrounding। Now the phenomenon occurs if the angle of incidence is greater than a certain limiting angle called critical angle। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केतबेले होबो जदि आपण आपण जो लाइट को इंसिडेंट करूचंती ए लाइट टा को एमितिया गोटे एंगल रे इंसिडेंट करूचंती जे से एंगल टी क्रिटिकल एंगल रु बेसी ना क्रिटिकल एंगल माने कोन क्रिटिकल एंगल होची सेही मिनिमम एंगल जोथरे कि आपण जेतलो गोटे जिंस टी को लाइट टी को छाडीबे तो लाइट टी आ रिफ्रैक्ट होबनी रिफ्लेक्ट करी जिवो तो मिनिमम से जो एंगल टी माने क्रिटिकल एंगल किबा क्रिटिकल एंगल रु अधिका एंगल रे जदि आपण गोटे लाइट को इंसिडेंट करूचंती ताले से केस रे मन रखंतो आपनकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन प्रथमे नेचर रे केमती मिराज
मिराज आपण जानिथिबे मृग तृष्णा देखिया मिराज on hot summer days the air near the ground becomes hotter than the air at higher levels the refractive index of air increases with its density okay आमे एते डिटेल को जीवानी बिकॉज वी आर ओनली प्रैक्टिसिंग फॉर प्रिलिम्स ना आमे खाली जानबा मिराज माने मृग तृष्णा रो जो कांसेप्ट ता तादरे फिजिक्स रो को कांसेप्ट यूज होची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नेक्स्ट डायमंड्स आपण देखिथिबे जे डायमंड्स बहुत शाइन नो डायमंड्स एते शाइन कोन पई करे ओके अलगा जते भी जिंसटरू कोन पई एंती होय कि डायमंड ही बेसी शाइन करे डायमंड्स आर नोन फॉर देयर स्पेक्टाकुलर ब्रिलियंस their brilliance is mainly due to total internal reflection of light inside them okay कोन पई डायमंड्स एते शाइन करंती कारण ताको भितरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होए बेटी मन रखंतु डायमंड और एयर रो क्रिटिकल एंगल होची केते 24.4 डिग्री जोटा कि बहुत स्मॉल तेणु कौन सी लाइट वंस ता भीतर को एंटर कले माने से बारंबार इंटरनल रिफ्लेक्शन ता भीतर हो थाए diamonds found in nature rarely exhibit the brilliance for which they are known it is the technical skill of a diamond cutter which makes diamond to sparkle so brilliantly अच्छा ऑप्टिकल फाइबर्स नेक्स्ट व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स को नहीं कि नहीं बारंबार क्वेश्चंस आसे दो मेंस क्वेश्चंस आसे ऑप्टिकल फाइबर्स कौन Nowadays, optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signals through long distances. प्राय बहुत long distance रे आपण signal transmit करा खले हम यूज करछे optical fibers. Okay. Now, optical fibers को जिनस रे बनिछि high quality composite glass वा quartz fibers. Okay. Now, optical fibers रे भी से same जिनस हुए एठी repeated total internal reflections है किनी गोटे पटरु आ गोटे पट आपनकर signal टी जाय. Since light undergoes total internal reflection at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of the light signal. Optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of the inner surface strikes the other at an angle larger than critical angle. Even if the fiber is bent, light can easily travel along its length. Thus, optical fiber can be used to act as an optical fiber. The optical fiber भी सही total internal reflection concept रे काम करछि. तेणु आप देखिए कि से क्षेत्र में हार्डली आपणकर कौन सी प्रकार लॉसेस हुए ऑप्टिकल फाइबर रे किछि प्रकार सिग्नल लॉसेस हुएनी सेतिपई ही लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन रे नॉर्मली एबे आपणकर ऑप्टिकल फाइबर्स ही यूज होची नेक्स्ट देखिबा एसआई यूनिट ऑफ पावर अच्छा जेहेतु आमे ऑप्टिक्स विषय कथा होतले गोटे स्मॉल पॉइंट खाली देखिबा पावर ऑफ लेंस आमे जो लेंस यूज करछे चश्मा यूज करछे तार एसआई यूनिट से पावर ऑफ लेंस रो एसआई यूनिट होछ कोन डायोप्टर 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 meter to the power minus 1 the power of lens of focal length of 1 meter is 1 diopter power of lens is positive for converging lens and negative for diverging lens The phenomenon of splitting of light into its component color is known as dispersion. The pattern of color components of light is called the spectrum of light. अच्छा, आपण देखिथिबे प्रिज्म व्हाइट लाइट जेतले प्रिज्म भीतर को गला सेटा कोन हे जाय 70 कलर से डिफरेंशिएट हे जाय एई जिंसटी को हमें डिस्पर्शन बोली किने कहू जेतले गोटे लाइट तार कंपोनेंट कलर्स बा कंपोनेंट पार्ट्स रे निजो को स्प्लिट करि दिए तो हमें ताको कोन को डिस्पर्शन बोली किने कहू अच्छा ये जो लाइट रो पूरा जो कंपोनेंट्स को हमें स्पेक्ट्रम बोली किने कहू some natural phenomenon due to sunlight the rainbow is an example of dispersion of sunlight by water drops in the atmosphere this is a phenomenon due to combined effect of dispersion refraction and reflection of sunlight अच्छा now next देखिबा प्राय आकाश ने आपन को ब्लू कलर ही दिसे Bluish color predominates in a clear sky since blue has a shorter wavelength than red
and is scattered much more strongly. In fact, violet gets scattered even more than blue, having a shorter wavelength. But since our eyes are more sensitive to blue than violet, we see the sky blue. अच्छा, sky हमको blue कौन पाइन देसे? एटा मधे मन रखता तो कारण blue color जो white light टा 7 colors रे dispersed ही जाए. तार जो ब्लू लाइट टी थाए वायलेट और ब्लू लाइट थाते मानकर सबुठु छोट बा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थाए मानकर तो से पय माने हमको पहुंचबा आगरु ही डिस्पर्स ही जानती बा कपे स्कैटर ही जानती सेनु हमको आकाश टी ब्लू कलर रो दिसे. At sunset or sunrise, the sun's ray have to pass through a large distance in the atmosphere. Most of the blue and other shorter wavelengths are removed by scattering. The least scattered light reaching our eyes, therefore the sun looks reddish. This explains the reddish appearance of the sun and full moon near the horizon. Electric current. Okay, electric current, देखिए what is electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. गोटे particular area रे केते electric charge move करूची गोटे unit time रे ताको electric current बोली किने कहंती. In other words, it is the flow of electric charge, rate of flow of electric charge. In circuits using metallic wires, electron constitute the flow of charges. Now, flow of charges माने कौन? Movement of electrons. Now, गोटे unit time रे केते electrons move कला बा केते charge move कला सेटा ही होची आपनकर electric current. अच्छा. However, electric current is considered to be the flow of positive charges. माने flow of positive charges माने कौन? Opposite to the flow of negative charges. ता माने मने रखंतु जदि इलेक्ट्रॉन आपनकर ए डायरेक्शन में मूव करूचंदी ताले हमें अज्यूम करू कि करंट टाइप तार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूची बोले. Conventionally, in an electric current, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons, which are negative charges. Now, if a net charge Q flows across any cross section of conductor in time t, then current I हमें discuss करिचे I is equal to charge per time माने Q by time. अच्छा, SI unit of electric charge होची कौन? Coulomb. The electric current is expressed. Electric current रो unit होची कौन? Ampere. 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of energy per second. Okay. गोटे coulomb चार्ज गोटे सेकेंड रे केते ट्रैवल कला. ओके, ए जो जिंसटी को आमे 1 एम्पियर बोली किनी को. ओके, नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर. छोटो छोटो करंट्स को हमें मिली एम्पियर बा माइक्रो एम्पियर हिसाब रे मेजर करू. इलेक्ट्रिक करंट मेजर करबा पे गोटे डिवाइस अछि जोटा कि एमीटर कहंती. आ एमीटर सदा बेले गोटे सर्किट रे सीरीज रे लागे. ओके, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट. For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. अच्छा, तेबे मने रखो आउ गोटे जिंस मध्ये इंपोर्टेंट अछि इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करिया पे इलेक्ट्रिक करंट रो मूवमेंट पई सेटा होची पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस वा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल माने कोन? एठी देइछि जे ओके, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. ओके, जब इलेक्ट्रॉन मूव करती गोटे जगह आउ गोटे जगह आप देखिए गोटे पॉइंट रो आउ गोटे पॉइंट भितर गोटे प्रकार इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट हुए. यही इलेक्ट्रिक प्रेशर टाको ही पोटेंशियल डिफरेंस बोली किनी कुआ जाए. दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आप प्रोड्यूस करि परिबे यूजिंग अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स. The chemical actions within a cell generate the potential difference across the terminals of the cell even when no current is drawn from. When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion. तो माने रखंतु चार्ज माने मोशन रे जीवा पई कोन दरकार? गोटे पोटेंशियल डिफरेंस दरकार. ए पोटेंशियल डिफरेंस हमें गोटे सर्किट रे केमती क्रिएट करि परिबा बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बैटरी. तबे पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करा जाए एज V. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन पर charge. Okay, W by Q. The SI unit of electric potential difference is volt. 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other point. Potential difference measure करिया पई जो डिवाइस टी यूज हुए सेटा होची वोल्टमीटर.
voltmeter is connected in parallel across the points. Ammeter in series connected way, voltmeter in parallel connect way. Next देखो, in 1827 a German physicist George Simon Ohm, okay, found that the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals. The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric current is directly proportional to current. ओम एटा देखिले जे पोटेंशियल डिफरेंस V, ओके, दुईटा मेटालिक वायर सॉरी गोटे मेटालिक वायर गोटे पॉइंट रो आ गोटे पॉइंट भितर जो पोटेंशियल डिफरेंस अछि V, it is directly proportional to the current flowing through it. V is directly proportional to I, but potential difference is directly proportional to current provided temperature remains the same. This is called as Ohm's law. Simple way to देखिबा, V is proportional to I, which means that V by I is equal to constant. A constant ta hochi kon? A constant ti hochi R. R is a constant for given metallic wire at a given temperature and is called resistance. So mone rakho, V by I is equal to R. Eti R hochi gote constant which is also known as resistance, okay, of a given metallic wire. Resistance is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. जेमती आमे मोशन रे थिला बेले हमकु रेजिस्ट करूची फ्रिक्शन, सेमती इलेक्ट्रिक चार्जेस गुडा जतबेले मोशन रे अछंती तांकु रेजिस्ट करे किए एई रेजिस्टेंस डोनेट करा जाए बाय द ग्रीक लेटर, ओके, ओमेगा. According to Ohm's law, R is equal to V by I. If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current is 1 ampere, ताले से केस रे रेजिस्टर होचे केते 1 ohm. अच्छा, 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. The current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is double, the current gets half. It देखो, current आउ resistance inversely proportional माने कोन? resistance बढ़िले current कमिबो, resistance कमिले current बढ़िबो. तेनु एटी दिया हिचे कोन? जदि आपण रेजिस्टेंस को डबल कर देबे ताल करंट टी हेजो आपनकर अधा. In many practical cases it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. आपण जदि electric current adjust करबा चाहछथि, you have to take the help of a resistor. अच्छा, a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. A component of a given size that offers a low resistance is called good conductor. जो जिनसटीर रेजिस्टेंस लो थिबो ना, लो रेजिस्टेंस माने करंट वल से पास हेथबो करथबो ताकू कहजिबो गुड कंडक्टर. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor. अच्छा, एटी मने रखंतु रेजिस्टेंस कहा कहा ऊपर डिपेंड करे. ओके, हमें तो जानले V by I is equal to R, which is resistance. So resistance depend कहा ऊपर करे? It depends on the length of the conductor. It depends on the area of cross section of the conductor. It depends upon the nature of the material. कि जो conductor टा सेटा को material रे बनी छि ता ऊपर मध्य depend करे. SI unit of resistivity. Next जानिबा resistivity. अच्छा, resistivity माने कोन? अच्छा, आमे तले रेजिस्टेंस देखिले, आमे देखले कि रेजिस्टेंस डिपेंड करूची कहा ऊपर? लेंथ ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके, रेजिस्टेंस डिपेंड करूची एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंती किछि. ओके, अच्छा, जदि आमे आको गोटे कांस्टेंट वे रे नबा, ओके, जदि आको गोटे फार्मूला रे कन्वर्ट करबा ताले R is equal to rho L by ए जो जिनसटी कांस्टेंट को आमे रेजिस्टिविटी बोली किनी कहू. अच्छा, resistivity ro unit hochi kono? The SI unit of resistivity is ohm meter. It is a characteristic property of the material. The metals and alloys have very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter. mone rakho, low resistivity mane resistivity ro rate kete 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6. किंतु जोड़ा insulators जो माने पास करंतिनी तांकर होची 10 to the power 12 रो 10 to the power 17 ohm meter. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature.
टेम्परेचर चेंज कले रेजिस्टेंस भी चेंज हुए टेम्परेचर चेंज कले आपनकर रेजिस्टिविटी मध्य चेंज हुए okay now coming to the next part okay. Now generation of heat in a conductor is an inevitable consequence of electric current हमें तो जानिले ओके जेतबेले भी आपण देखिबे इलेक्ट्रिक करंट गोटे कंडक्टर थ्रू पास करूची आपण देखिबे जे इलेक्ट्रिक पास हवा सहित किछि हीट मध्य जनरेट होउची ओके ई जिंसटी मन रखितांतो जेतबेले आपण देखिबे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होउची जो थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट पास हबो सेई थ्रू मन रखंतु गोटे टाइप रो हीट मध्य जनरेट हबो तेपे ऑफन आपण देखितबे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गोटा प्राय गरम हो जाती बा इलेक्ट्रिकल वायर को केतले छुईबे जदी सेटा टिके हल्का गरम थिबो ओके तो एडी सेया देखछि जनरेशन ऑफ हीट ओके जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर is an inevitable consequence of electric current. In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. अच्छा, electrical energy heat को किसी part of electrical energy convert हो जाऊँगी तमन्ना obviously it is undesirable. In electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. However, heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry iron, electric toaster, oven, kettle and electric heater are some familiar devices based on Joule's heating effect of अच्छा heating effect of electric current माने बुझी पारलो कोन गोटे कंडक्टर थ्रू जदि आपण करंट छाडिबे आपण देखिबे कि से कंडक्टर रे हीट मध्य प्रोड्यूस होछि The rate at which electrical energy is dissipated or consumed in an electric circuit is termed as electric power. हमें normal power विषय पढ़ीथिले एटी electric power विषय देला अच्छा electrical terms रे power केमती कैलकुलेट हुए P is equal to potential difference V into I current अच्छा किंबा P is equal to I square R current रो square into resistance or voltage रो square divided by resistance SI unit of electric power होची कोन watt. It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated in a potential difference of 1 volt. Now, unit होची watt. Watt unit होची बहुत small. Therefore, in actual practice, आमे use करू गोटे larger unit जोटा कि होचे kilowatt. Kilowatt is equal to 1000 watt. Since electrical energy is the product of power and time, the unit of electrical energy is therefore watt hour. मन रखंतु. Electric energy रो okay unit होची कोन watt hour 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour kWh जो मीटर रीडिंग हुए हम घरे जो यूनिट मेजर हुए सेटा किलोवाट आवर रे मेजर हुए अच्छा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स In our homes, we receive supply of electric power through a main supply. Okay. आम घरे आमे जो electric power, okay, जो receive आमको main supply रो मिले, okay, either supported through overhead electric poles or by underground cables. One of the wires in this supply, usually with red insulation cover, is called live wire. अच्छा. तीनटा प्रकार वायर आपण पाइबे हम डिस्कस करबा प्रथम एमतिया वायर पाइबे जोथरे कि रेड कलर रो इन्सुलेशन कवर थाए ताको कोआ जाय लाइव वायर आ गोटे वायर थाए जोथरे कि ब्लैक इन्सुलेशन थाए ताको कोआ जाय न्यूट्रल वायर अच्छा द पोटेंशियल डिफरेंस थाए आम कंट्री रे केते 220 वोल्ट इन्सुलेशन वायर आ लाइव वायर भीतर रो जो पोटेंशियल डिफरेंस थाए सेटा 220 वोल्ट रो थाए at the meter board in our house these wires pass into an electric meter through a main fuse. Through the main switch, they are connected to the line wires in the house. These wires supply electricity to separate circuits within the house. Often, two separate circuits are used, one of 15 ampere current rating for appliances with higher power ratings such as geyser, air coolers, etc. The other circuit normally घरे दुईटा अलग अलग सर्किट को अलग अलग प्रकार आमे दो करंट रेटिंग गोटे 15 एम्पियर वाला और गोटे 5 एम्पियर वाला सर्किट थाए 5 एम्पियर वाला सर्किट नॉर्मली बल्ब्स फैंस को कैटर करे 15 एम्पियर वाला हमर एसी गीजर्स ताको ओके माइक्रोवेव
द अर्थ वायर अच्छा थर्ड वायर होची अर्थ वायर जोटा कि इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर रे थाए यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस अच्छा this is used as a safety measure especially for those appliances that have a metallic body जैसे कि electric press toaster table fan refrigerator the metallic body is connected to the earth wire which provides a low resistant conducting path to the current आ द्वारा कोन आपण श्योर हेबे कि कोनोसी प्रकार लीकेज हो नाही ओके कारण the body of the appliance keeps its potential to that of the earth and the user may not get a severe electric shock. Okay. Now overloading केतबळे हुए ओके आपण सुनिथिबे overloading केतबळे हुए short circuiting overloading can occur when the live wire and the neutral wire comes into direct contact जेतले live wire और neutral wire निज निज सहित direct contact रे आसी जिवे सेतले आपनकर हेई पारे कोन overloading this occurs when the insulation of wire is damaged or there is a fault in the appliance in such a situation the current in the circuit abruptly increases this is called short circuiting okay तो ये जानि पारले कोन हुए जेतले भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर निज निज कांटेक्ट रे आसी जाए ओके सेतले कोन होबो करंट इन द सर्किट बहुत बढ़ी जाए आकु कहा जाए शॉर्ट सर्किटिंग यूज तेणु यूज करिया कथा कोन इलेक्ट्रिकल फ्यूज द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज by stopping the flow of unduly high electric current. The joule heating that takes place in the fuse melts it to break the electric current. Overloading can also occur due to accidental hike in the supply voltage. Sometimes overloading is caused by connecting too many appliances to a single socket. Okay. So, our part, our physics part, sorry la. Now we'll start with the chemistry part. केमिस्ट्री रो बेसिक जिंस स्टार्ट हुए आपनकर कोठी गोटे एटम रो स्ट्रक्चर अपन जानछन कोन से मैटर को डिवाइड करले आसीबो मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड करले हमको मिलबो एटम नाउ व्हेन इट कम्स टू एटम ओके आमे जोडा पिक्चराइज करछु एटम एई प्रकार किछि थाए ओके मझिरे थाए न्यूक्लियस रे थाए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एवं ता चारि परे इलेक्ट्रॉन्स माने रिवॉल्व होथांती विथ डिफरेंट ओरिएंटेशंस ओके concentric circles नाती डिफरेंट ओरिएंटेशन रो डिफरेंट सेल्स रे इलेक्ट्रॉन्स गुडा मूव करू थांती ना आमे पढिबाटी इलेक्ट्रॉन कोन प्रोटॉन कोन न्यूट्रॉन कोन प्रथमे इलेक्ट्रॉन हो जोटे सबएटॉमिक पार्टिकल जार की नेगेटिव 1 एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक चार्ज अछि इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द लेप्टॉन पार्टिकल फैमिली ओके आ एटा गोटे प्रकार एलिमेंटरी पार्टिकल अच्छा इलेक्ट्रॉन रो मास होची 1/1836 दैट ऑफ प्रोटॉन माने जानि परतो कि प्रोटॉन टरू बहुत ही हल्का थाए इलेक्ट्रॉन now like all elementary particles electron exhibit properties of both particles and wave electron रो किछटा particle properties अछि किछटा wave properties अछि okay अच्छा as with all particles electrons can act as waves this is called as wave particle duality अच्छा इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करे बहुत गुडे फिजिकल फेनोमेना रे जेंते कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म केमिस्ट्री एंड थर्मल कंडक्टिविटी they also participate in gravitational electromagnetic and weak interactions okay तो आपण बुझी परथबे कि बहुत ही इंपोर्टेंस अछि okay now next देखिबा कोन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज तेनो त चारि करे सदाबले आपण गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड पाइबे ओके जदि इलेक्ट्रॉन टी मूविंग अछि रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ताले देखिबे त चारि करे गोटे मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुए नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जोटा कि प्रोड्यूस हुए ओके due to an electron okay it is according to the Lorentz force law आमे जानने ना इलेक्ट्रिक फील्ड केतले क्रिएट होची इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होची गोटे जेतु इलेक्ट्रॉन रो बाय डिफॉल्ट गोटे चार्ज अछि जेनु ता चारि करे आमे देखु जे कोन क्रिएट होची गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होची जदी से इलेक्ट्रॉन टी मूव करछि तले आमे देखु जे ता चारि करे गोटे मैग्नेटिक फील्ड मध्ये क्रिएट होची माने जदी आमे देखु जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होची ड्यू टू द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ताले एटा को फोर्स जोगु होची लॉरेंज फोर्स लॉ जोगु होची इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड यदि इलेक्ट्रॉन्स को हमें हाई एनर्जी दे दबा तो से माने रेडिएट बा एब्जॉर्ब करंती एनर्जी को फॉर्म रे फोटॉन्स फॉर्म रे करंती
अच्छा, electrons are involved in many applications such as tribiology or frictional charging, electrolysis, electrochemistry, battery technology, electronics welding, cathode ray tubes, photoelectricity, photovoltaic solar panels, electron microscope, radiation therapy, laser, gaseous ionization detectors or particle accelerators. Achha, electron participate in nuclear reactions also, okay, such as nucleosynthesis in stars where they are known as beta particles. जो electrons गुड़ा nuclear reactions रे part नहीं होती ताको beta particles कहते. Electrons can be created through beta decay of radioactive isotopes. Radioactive isotopes को जदि decay करा जीवो ताले से इतना अपन को कौन मिलेगा? Electrons मिलेगा. And in high energy collisions for instance, okay. तो अपन को natural way रे radioactive form रे भी मध्य electrons मिलेगा, okay. कि बीटा डिके हेले कि जदि बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स निज सहित कोलाइड करछन्ती से केस रे मध्ये आपन को इलेक्ट्रॉन्स मिलिबो. प्रोटॉन कोन? प्रोटॉन होची गोटे स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल सिंबल Ph+, ओके, विथ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. प्रोटॉन रो गोटे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज थाए. इट्स मास इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, स्लाइटली, ओके. किंतु नॉर्मल हिसाब में हमें जतले नो प्राय 1 mu दी जनकर मास बोली कि हमें कंसीडर करू. किंतु हाँ, इलेक्ट्रॉन अपेक्षा प्रोटॉन की बहुत बेसी भारी थाए. Protons and neutrons each with a mass of approximately 1 atomic mass unit are jointly referred to as nucleons. अच्छा, one or more protons are present in the nucleus of every atom. प्रत्येकटी atom रो nucleus रे गोटे किंबा गोटे रु अधिक प्रोटीन थाए. Okay. They provide attractive electrostatic central force जे कि bind करे electrons कोड़ा को. अच्छा, now केतेटा प्रोटॉन अच्छी गोटे न्यूक्लियस रे एटा डिटरमाइन करे कि गोटे एलिमेंट रो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन. तेणु नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को गोटे ना दिया है जोटा कि होची कोन एटॉमिक नंबर. सिंस ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर which determines the number of atomic electrons and consequently the chemical characteristics of the element. Protons were originally considered to be elementary particle in the modern standard model of particle physics. Protons are known to be composite particles. Proton होचନ୍ତି composite particles. अंक भीतर आपण को तीनटा free valence quarks मिलिबे and together with neutrons are now classified as hadrons. Okay, जेंते में देखिले ना कि इलेक्ट्रॉन को लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करंती, प्रोटॉन्स ओडा बिलोंग करंती टू hadrons. Protons are composed of 2 up quarks of charge and 1 down quark. एटा मने रखंतु प्रोटॉन भीतर जो पार्टिकल थांते ताको क्वार्क्स बोली किनी कुआ जाय. Free protons occur occasionally on earth केतबळे thunderstorms हेले, okay. At sufficiently low temperature and kinetic energy, free protons will bind to electrons. न्यूट्रॉन कोन? ओके, न्यूट्रॉन भी होची गोटे सब एटॉमिक पार्टिकल, अच्छा, which has neutral or which you can say as a zero charge and a mass slightly greater than that of a proton. अच्छा, आपण एठी कोन पाइबे? आपण पाइबे कि न्यूट्रॉन क्षेत्र रे फर्स्ट ऑफ ऑल एठी जो मास टी थाए, ओके, जो सब एटॉमिक पार्टिकल रो मास टी थाए एटा स्लाइटली प्रोटॉन रो अधिक थाए, बट आमे दुई जण जाक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रही 1 mu मास बोली किनी कंसीडर करू. किंतु न्यूट्रॉन रो कोनोसी प्रकार चार्ज न थाए, ओके, इट इज टोटली न्यूट्रल. Protons and neutrons constitute the nuclei of atoms. Since proton and neutrons behave similarly within the nucleus, they are both referred to as nucleons. एटा हमें पढ़ी थिले. Nucleons have a mass of approximately 1 atomic mass unit or dalton. अच्छा, protons and neutrons are not elementary particles. एठी मन रखो, they are not elementary particles. किंतु इलेक्ट्रॉन होची गोटे elementary particle. अच्छा, प्रोटॉन जेमती प्रोटॉन रे हमें देखिथिले तीनटा क्वार्क अछि, सेमती न्यूट्रॉन को डिवाइड कले मध्ये आपन को तीनटा क्वार्क मिलिबो. एबे आसीबा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री माने बेसिकली कह गले जतले केमिकल एनर्जी को आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करूचंती किंबा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करछन ओरे केमिकल एनर्जी कन्वर्सन पाई ताकू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोली किनी
कुहा जाए. A large number of metals like sodium hydroxide, chlorine, fluorine and many other chemicals are produced by electrochemical methods. Batteries and fuel cells convert chemical energy into electrical energy and are used on large scale in various instruments and devices. Okay. तो आपण कहि परिबे कि बैटरीज एंड सेल्स रा आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रा परफेक्ट एग्जांपल बोली कि the transmission of sensory signals through the cells to brain and vice versa. Okay. सेल रू ब्रेन को किंबा ब्रेन को सेल को ट्रांसफर जो भी सिग्नल होची सेटा मध्य आपनकर इलेक्ट्रोकेमिकल मैनर रे होची माने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गुडा केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर होचंदी पुनी केमिकल सिग्नल्स गुडा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर होचंदी. Cells that convert the chemical energy to electrical energy is called a galvanic or voltaic cell. मन रखो जो सेल गड़ा सेल माने we are not talking about the biology cell. It is cell माने we are talking about the chemistry cell. गोटे सेल गोटे एमितिया डिवाइस जोटा कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करूची. ओके galvanic or voltaic cell. A device for using electrical energy to carry non-spontaneous chemical reaction. अच्छा galvanic cell माने कौन? A galvanic cell होची गोटे electrochemical cell जे convert करे chemical energy of a spontaneous redox reaction to electrical energy. In this device, the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work. अच्छा Gibbs energy माने कौन? गोटे chemical reaction भितरे जो energy टी use हुए ताको Gibbs energy बोली किने कहते. तो सेही chemical reaction भितरे थिबा Gibbs energy को एठी electrical work रे convert हुए, which may be used to run a motor or other electrical gadgets like heater, fan, geyser, etc. अच्छा एटा देखि परथबे आपण कोन galvanic cell एठी कोन देखिबे कि each half cell consists of a metallic electrode dipped into an electrolyte. Okay. Now एठी पूरा देखुथबे कि electrolytes अछि आ आपण कोन दीटा electrode अछि. The two half cells are connected by a metallic wire through a voltmeter and a switch externally. The electrolytes of the two half cells are connected internally through a salt bridge. A electrolytes मानको connect करा हेचे through a salt bridge. Sometimes both the electrodes deep in the same electrolyte. अलगा electrolyte न नेकिनी गोटे same electrolyte मध्य हमें नहीं परिबे. एक केस रे हमको salt bridge दरकार नथांता किंतु. At each electrode electrolyte interface, ओके जो भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट निज निज को मीट करूचंती सेठी गोटे टेंडेंसी अछि मेटल आयंस मानकर कि टू डिपोजिट ऑन द metal electrode trying to make it positively charged. At the same time, metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons at the electrode trying to make it negatively charged. At equilibrium, there is a separation of charges and depending on the tendencies of the two opposing reactions, the electrode may be positively or negatively charged. Electrons positive भी हो पारंती, negative भी हो पारंती. केमिति मु कहली जेंति दिया हेतला जो दीटा इलेक्ट्रोड्स यूज हुए आपनकर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे डिप्ट थाए गोटे इलेक्ट्रोड रो टेंडेंसी थाए कि से निज आड़ को इलेक्ट्रॉन्स रा अट्रैक्ट करके डिपोजिट कराए. ओके तो एटा नेगेटिवली चार्ज थाए. ओके ना गोटे इलेक्ट्रोड टेंडेंसी थाए कि से आयंस मान को पॉजिटिव आयंस आड़ को निज आड़ को अट्रैक्ट करके डिपोजिट कराए ना. ऑब्वियसली तार कोन रहइबो तार येटी पॉजिटिव रहइबो. ओके मन रखंतु दीटा इलेक्ट्रोड्स भितरु गोटे इलेक्ट्रोड निजठू मेटल आयंस को निजठू माने कोन करे उड़े दिए. ओके बा इलेक्ट्रोलाइट को सेंड कर दिए सेटा हो जाए नेगेटिव चार्ज. ऑन द अदर हैंड गोटे इलेक्ट्रोड एमतिया थाए जोट कि मेटल आयंस ओडा जाइकनी डिपोजिट होंती आ ये हो जाए पॉजिटिव चार्ज. तो जो दीटा इलेक्ट्रोड थाए तादर गोटे पॉजिटिवली चार्ज हो जाए गोटे नेगेटिवली चार्ज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन. A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called as the electrode potential. In galvanic cell, तबे galvanic cell रे कौन हुए देखो. In galvanic cell, the half cell in which oxidation takes place is called anode. जो थरे oxidation हुए ताको anode कुआ जाए. और तार गोटे negative potential थाए with respect to solution. आरो half टा जोटा को ताको cathode बोली कहंती. It has a positive potential with respect to the solution. Thus, there exists a potential difference between the two electrode. दुईटा को electrode गोटे positive गोटे negative माने दुईजन को भीतर कौन अछि ता माने
पोटेंशियल डिफरेंस अछि ए पोटेंशियल डिफरेंस जोटी आसला सेठी कोन हबो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करबा स्टार्ट करिवे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करिया स्टार्ट करिवे माने इनडायरेक्टली कोन जनरेट हबो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हबो ना ए रिएक्शंस हम पाइन दरकार नै अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे कोन होवे in an electrolytic cell external source of voltage is used to bring about a chemical reaction electrolytic cell रे उल्टाटा हुए एठी कोन हुए आपण आगो इलेक्ट्रिसिटी दोउचंती केमती दोउचंती बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज आ ता परे तादर गोटे केमिकल रिएक्शन सेटअप होची डिटेल्स को हमें जेबानी एठी खाली एठी गोटे इंपोर्टेंट देखंतु this is the basis for industrial processes जोट की impure copper is converted into copper of high purity the impure copper is made an anode that dissolves on passing current and pure copper is deposited at the cathode many metals जैसे कि sodium magnesium aluminum are produced on large scale by electrochemical reduction of their respective cations where no suitable chemical reducing agents are available for this purpose sodium and magnesium metals are produced by electrolysis of their fused chloride and aluminum is produced by electrolysis of aluminum okay so it totally देइछि कि आपण को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द्वारा impure metal रू आपण प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करि परिबे बैटरी कोन a battery is composed of one or more than one cell connected in series or cell that we use as a source of electrical energy is basically a galvanic cell where the chemical energy of a redox reaction is converted into electrical energy. So battery रे बहुत गुडे galvanic cells गुडा in series लगी था गोटे भी पारे बा गोटे रो अधिक मध्य लगी पारे. However, for a battery to be practical use, it should be reasonably light. बैटरी practical use करथवा बैटरी गुडा light रहया कथा हल्का रहया कथा compact माने छोटो रहया कथा and its voltage should not vary appreciably during its use. Use kala bele jenti voltage fluctuations ho nathwa kotha. There are mainly two types of batteries. Primary batteries, jothre ki reaction occurs only once, and after use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused again. Once jetale battery ro charge kami gala, tapre apan tako recharge kari paribeni taku kuha jaye kona primary batteries. The most familiar example of this type of battery is a dry cell known as a Lackland cell after its discoverer, which is commonly used in transistors and clock. The cell consists of a zinc container that also acts as an anode and cathode is a carbon or graphite rod surrounded by powdered manganese dioxide and carbon. Tika khali dekhi debe okay kon ta composition ache kon ache space between the electrode here is filled by a moist paste of ammonium chloride and zinc chloride. Acha mercury cell our type of primary cell primary battery. Mercury cell is suitable for low current devices jemti ki hearing aids watches etc. It consists of zinc mercury amalgam as a node and a paste of HgO mercury oxide and carbon as the cathode. सेकेंडरी सेल कौन सेकेंडरी सेल जोड़ा घरे मोस्टली आम करंट कटि गले जो बैटरी इन्वर्टर यूज कर इन्वर्टर बेस्ड बैटरी सेटा होचंदी सेकेंडरी सेल्स secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again. A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles. The most important secondary cell is the lead storage battery commonly used in automobiles and inverters. Inverter or automobile that are used mostly lead storage battery. It consists of a lead anode and a grid of lead packed with lead dioxide as cathode. A 38% solution of sulfuric acid is used as an electrolyte. Another important secondary cell is the nickel cadmium. Our type of secondary cell is nickel cadmium cell, which has longer life than the lead storage cell but more expensive to manufacture. Fuel cell corner. Production of electricity by thermal plants is not a very efficient method and is a major source of pollution. In such plants, the chemical energy of fossil fuels, coal, gas or oil is first used for converting water into high pressure steam.
This is then used to run a turbine. किंतु आपको जाना अच्छी कि ये जो thermal plants रू produce होला बरे बहुत pollutions होची. अच्छा किंतु आमे जानी चाहिए जे cells use करिकिनी आमे directly chemical energy रू electricity पाई पारिबा. It is now possible to make such cells in which reactants are fed continuously to the electrodes and products are removed continuously from the electrolyte compartment. Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy. एमितिया galvanic cells जो माने कि use करूचंती hydrogen, methane, methanol वाला gas to convert them into electrical energy एमान को fuel cell बोली कुआ होची. One of the most successful fuel cell होची कौन hydrogen fuel cell which is formed by the reaction of hydrogen with oxygen to form water. अच्छा हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज हेची कोथरे अपोलो स्पेस प्रोग्राम रे. The water vapor produced during the reaction were condensed and added to the drinking water supply of the astronauts. These have been used in automobiles on an experimental basis. Fuel cells are pollution free. Fuel cell advantage होची कि एटा pollution free तांती. In view of their future importance, a variety of fuel cells have been fabricated and tried. What type of fuel cells अबे try होची, discovery होची. अच्छा in the cell hydrogen and oxygen are bubbled through porous carvous electrode. अच्छा एठी fuel cell रो गोटे example देछि, will not go into the detail. okay आमे basically जा जानिले एठी कोन जानले कि एई केस रे आपनकर हाइड्रोजन यूज होछि. हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और ए प्रोसेस रे कोन होछि आपनकर वाटर फॉर्म होछि. कैटलिस्ट हिसाब रे ए केस रे यूज होछि डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reaction. The cell runs continuously as long as the reactants are supplied. Fuel cell रे को जो पर्यंत आपण तर raw material जोगेबे माने reactants देबे से पर्यंत reaction टी चालुथबो आ continuously electricity generate करथबो. एठी देखंतु लेखा हिचे कोन fuel cells produce electricity with an efficiency of about 70% compared to thermal plants whose efficiency is about 40%. Fuel cell efficiency 70%, thermal power plant efficiency 40%. Man, naturally, fuel cell better energy amuku electrical energy miluchi. There has been tremendous progress in the development of new electrode material, better catalyst and electrolytes for increasing the efficiency of fuel cells. अच्छा तेबे corrosion माने कोन सेटा टिके देखिबा. Corrosion slowly coats the surface of metallic objects with oxides or other salts of the metal. बेले बेले देखिबे कोन से जदी metal रू created थिबो कि आयरन हरिका रू देखिबे slowly ता ऊपर junk खाई जाए. ओके ए जो junk जोटा हमें कहूचो एटा होची कोन corrosion. ओके corrosion बा rusting. ओके तो rusting of iron हे गेला, tarnishing of silver बेले बेले देखिबे silver जिंसटी कळा पड़ी जाए. Development of green coating on copper over green coating and bronze are some of the examples of corrosion. Achha, it causes enormous damage to buildings, bridges, ships and to all objects made of metal, especially that of iron. We lose crores of rupees every year on account of corrosion. In corrosion, a metal is oxidized by loss of electrons to oxygen and formation of oxide. एठी कोन हुए प्योर मेटल्स गुड़ा ऑक्साइड्स को कन्वर्ट हो जाए जहाँ जो कि सेठी रस्ट होबा स्टार्ट हो जाए. corrosion of iron commonly known as rusting occurs in presence of water and air. ये जो मेटल टी निज ऑक्साइड को कन्वर्ट केतबेले हुए जेतबेले मॉइस्चर वाटर और एयर रो प्रेजेंस थाए. अच्छा प्रिवेंशन ऑफ corrosion is of prime importance. If not it not only saves money but helps in preventing accident जेमति कि breach collapse रो help करे. One of the simplest method of preventing corrosion is to prevent the surface of metallic object to come in contact with atmosphere. जदि आमे मेटल टी को atmosphere contact रे आनिया को ही दबानी ताले corrosion मध्य केबे हबो नाही. तबे एटा किमती हे परिबो. This can be done by covering the surface with paint. आपण paint करि देबे okay by some chemical बा कवर करि देबे सरफेस टाको आउ गोटे मेटल यूज करिकिनी ओके that are inert or react to save the object. An electrochemical method is used to provide a sacrificial electrode of another metal which corrodes itself but saves the object.
नेक्स्ट देखिबा पीरियोडिक टेबल। अच्छा पीरियोडिक टेबल रे कोन अछि? Periodic table, modern periodic law can be stated as physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic numbers. जेतले आमे protons विषय पढ़िले आमे कोन पढ़िले कि number of protons होची atomic number और number of protons पर atomic number determine करे कि गोटे substance रो physical बा chemical properties केमितिया अछंती। एटा ही होची आपनकर periodic modern periodic law. अच्छा the periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements. The atomic number is equal to nuclear charge, that is number of protons or the number of electrons in a neutral atom. It is then easy to visualize the significance of quantum numbers. Next देखिए एटा आपन सामने रही पीरियोडिक टेबल ये क्लोजली देखंतु ताको पीरियोडिक टेबल को ना पीरियोडिक टेबल रो आपन को कोन देखिया को मिलिबो बा पीरियोडिक टेबल रे केमिति ये हेता है लेट अस सी टू दैट अच्छा पीरियोडिक टेबल रे आपन देखिथिबे किछि हॉरिजॉन्टल रोज ओके ए हॉरिजॉन्टल रोज ओके आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम्स उडा को जाय एज ग्रुप्स ओके आकु पीरियड्स को जाय वर्टिकल कॉलम्स उडा को ग्रुप्स को जाय अच्छा एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल ये जो वर्टिकल रे जो एलिमेंट्स उडा अरेंज थांती आंकर गोटे सिमिलरिटी देखिबे कि आंकर आउटर सेल रे सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट ही है ओके referred to as groups or families अच्छा केतेटा ग्रुप्स अछंती the groups are numbered from 1 to 18 total of 18 groups अच्छी there are altogether our periods केतेटा अछंती 7 periods the period number corresponds to the highest principal quantum number n of the element in the period the first period contains two elements the subsequent period तापर period तार अछि 8 तापर period तार 8 तापर 18 तापर 18 और तापर 32 elements respectively the seventh period is incomplete माने रखंतु 7th number period ता incomplete अछि and like the sixth period would have a theoretical maximum on the basis of quantum number of 32 elements okay एति कि हमको एते डिफरेंस जानिया दरकार नै आपन को जणा रखियार अछि periods केतेटा अछि 70 अछि आउ आपणकर टोटल ग्रुप्स केतेटा अछि 18 टा the period indicates the value of n for the outermost or valence cell the seventh period is similar to the sixth period it includes most of the man made radioactive elements we can classify elements into four blocks आमे पूरा periodic table रे जति कि भी elements अछंती ताको चारिटा block रे classify करिवा से चारिटा block होची कोन S block P block S block P block D block and F block okay देखिया differences कोन ताका भितरे let us see that अच्छा एटी फर्स्ट डेटा एक्सेप्शन केस देखिबा प्रथमे होची हीलियम बिलोंग्स टू S block but position करा है जे ताको P block रे okay along with the group 18 elements मन रखो हीलियम एक्चुअली बिलोंग करची S block को किंतु आमे ताको पोजीशन करैछु P block रे कोन पई okay because it has a completely filled valence cell and as a result exhibit properties similar to that of noble gases similarly hydrogen out exception हाइड्रोजन बिलोंग करूची हाइड्रोजन रो मात्र गोटे ही s इलेक्ट्रॉन अछि हेंस ग्रुप 1 रे आकु प्लेस करिया कथा माने अल्काली मेटल ग्रुप्स रे ओके किंतु जेहेतु आरो प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 सहित मैच करूची हैलोजन फैमिली सहित मैच करूची तेनु ताको कोन कराइची नाही ग्रुप 1 रे प्लेस कराइची नाही ग्रुप 17 रे ताकू टोटली पीरियोडिक टेबल रे गोटे निजरा सेपरेट प्लेस दिया हेची because it is a special case hydrogen is placed separately at the top of the periodic table बाकी समस्त रो सेपरेटली प्लेस करा हेची हाइड्रोजन को अच्छा s block elements देखबा कोन the elements of group 1 माने alkali metals और group 2 alkaline earth metals
which have outer configuration of NS1 and NS2. Okay, आमे खाली जानिबा S block रे आछन कोन group 1 alkali metals, group 2 alkaline earth metals. Okay, एमानकर metallic character थाए generally और reactivity increase करे as we go down the group. Because of high reactivity they are never found in pure in nature. Group 1 और group 2 माने alkali metals और alkaline earth metals बा S block elements को आपण केबे भी pure stage रे पाइबेनी because they are highly reactive in nature और अलग अलग जिंस से माने react करि देई थांती. The compounds of the S block elements with the exception of those of lithium and beryllium are predominantly ionic. आरो सबु जका एलिमेंट्स आयोनिक केवल दुईटा को छाड़ी देई लिथियम आउ बेरिलियम. P block रे आछी कोन group 13 14 15 16 17 और 18 and these together with the S block elements are called representative elements or main group. S block और P block को मिसै देले एटा को main group elements बोली किनी कुहा जाय. अच्छा, at the end of each period is a noble gas. मन रखो सबो पीरियड रो एंड रे आपन को मिलिबो गोटे नोबल गैस एलिमेंट विथ अ क्लोज्ड वैलेंस सेल. माने तांको वैलेंस सेल पूरा कंप्लीट थाए तेनु से माने आउ कहा सहित रिएक्ट करंती नाही. द नोबल गैसेस एक्सिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी. अच्छा, preceding the noble gas family are two chemically important groups of non metals. Just तमरो नोबल गैस पूर्वरु दुईटा ग्रुप अछि. नोबल गैस तो होछि ग्रुप नंबर 18 ता आगुरु दुईटा ग्रुप अछि ग्रुप 17 और ग्रुप 16. ग्रुप 17 को कुआ जाय हैलोजेन्स, ग्रुप 16 को कुआ जाय शैल्कोजेन्स. These two groups of element readily and one or two readily adds one or two electron respectively to attain the stable noble gas configuration. अच्छा, ए ग्रुप 17 और 18 17 16 18 मानकर नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली थाए. तापर होची डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर गोटे स्पेशल ना अछि देखंतु ट्रांजिशन एलिमेंट्स. These are the elements of group 3 to 12. Group 3 ru 12 को हमें transition elements बोली कोचे माने D block. They are all metals. They mostly form colored ions. अगर ions थोड़ा generally colored थाए. अच्छा, they exhibit variable valency, paramagnetism and often used as catalyst. However, zinc, cadmium and mercury do not show most of the properties of transition elements. अच्छा, transition metals are a bridge between chemically active metals of S block elements and less active elements of group 13 and 14 and thus take their familiar name as transitional elements. तापरे होची F block elements को inner transition elements बोली किने कुहा जाय. अच्छा, F block आपण देखिथिबे एटा पूरा periodic table रो separately तळे दुईटा रो रे arrange हेताय. The two rows of elements at the bottom of the periodic table. अच्छा, ए दुईटा रो रो ना होची lanthanoid and actinoid. The last electron added to each element is filled in F orbital. अच्छा, they are all metals. मन रखंतु F block elements माने जते भी lanthanoids और actinoids ए सब जाक metals. Within each series the properties of the elements are quite similar. किंतु आपण प्राय देखिबे F block elements are generally man made and radioactive in nature. एटी गोटे देखंतु periodic table रे केमती जिंस चेंज हुए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप रु जेंती ऊपर को उठिबे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुए. एटॉमिक रेडियस ग्रुप तळ को आसले कमे. अच्छा, सिमिलरली देखिबे एटॉमिक रेडियस राइट रु लेफ्ट इंक्रीज करूची, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किंतु डिक्रीज करूची. तो अकॉर्डिंगली ए जिंस टिके देखि देबे. अच्छा, नेक्स्ट होची रेडियो एक्टिविटी कोन? ओके, radioactivity is the property of some unstable atom. Radioactivity होची गोटे property जोति पई कि जो atoms रा unstable ना जो जिंस सब unstable थांती समान निजो को stable करिया पई बहुत चेष्टा करंती. So radioactivity is the property of some unstable atoms to spontaneously emit nuclear radiation, usually alpha particles or beta particles often accompanied by gamma rays. तो एटी कोन हुए जो unstable atoms थोड़ा थांती. ओके, सेमाने निज भितर या तो गोटे अल्फा पार्टिकल बा बीटा पार्टिकल एमिट करंती आउ से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल सहित बेले बेले गामा रेज मध्ये एमिट करंती इन द प्रोसेस. के डिस्कवर करितले रेडियो एक्टिविटी? A.H. Becquerel. ओके, ना तीनटा टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिके अछि. तीनटा टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिके होची कोन?
अल्फा डीके बीटा डीके आ गामा डीके अल्फा डीके माने कौन ओके जितेबाला आप देखुं गोटे अनस्टेबल एटम रु गोटे हीलियम न्यूक्लियस एमिट हो ना हीलियम न्यूक्लियस माने कौन एमतिया न्यूक्लियस जो आप पाइबे दुईटा प्रोटॉन और दुईटा न्यूट्रॉन माने गोटे अनस्टेबल एटम रु जो दुईटा प्रोटॉन और दुईटा न्यूट्रॉन एमिट होती आमे कहबा एज अल्फा डीके अच्छा बीटा डीके माने कौन जितेबाला आप देखुं गोटे अनस्टेबल एटम निज भितर या तो गोटे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बा गोटे पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन एमिट करुच्ची तो ताको कहा जाए बीटा डीके गामा डीके कौन गामा डीके केस रे नाही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन सी सब एटॉमिक पार्टिकल ए केस रे एमिट होंतिनी रादर एमिट हुए केस रे कौन हाई एनर्जी photons emit हुए each of this decay will be considered in subsequent subsections अच्छा तीनटा जाक डीके रे कौन कौन एमिट हुए हमें जानना now बीटा डीके दुई टाइप रो अछि बीटा माइनस और बीटा प्लस ओके डायग्राम रे देखे दोची बीटा माइनस रे कौन होची बीटा माइनस रे आपण देखुचंती इलेक्ट्रॉन एमिट होची ओके अनस्टेबल एटम रो इलेक्ट्रॉन एमिट होची किंतु बीटा प्लस रे देखंतु एठी इलेक्ट्रॉन नो एठी गोटे पॉजिट्रॉन एमिट होची नाउ अनस्टेबल न्यूक्लियस दैट अंडरगोज गामा डीके अच्छा गामा डीके कौन पाए मैं कहली गामा डीके रे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किछि रिलीज होनी बस फोटॉन्स एमिट होउचंती अच्छा अनस्टेबल न्यूक्लियस जो मानकर कि गामा डीके हुए आर द प्रोडक्ट्स आइदर ऑफ अदर टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव अल्फा एंड बीटा नॉर्मली देखा जाए कि जो थे ऑलरेडी अल्फा किंबा बीटा डीके होउची अल्फा डीके हमें जानिले जो थ्रू गोटे हीलियम न्यूक्लियस बा दुईटा प्रोटॉन अलोंग विथ दुईटा न्यूट्रॉन रिलीज होउचंती बीटा डीके माने जो थे इलेक्ट्रॉन किंबा गोटे पॉजिट्रॉन एमिट होउची तो आ सहित ही जनरली आपण पाइबे कि गामा रेडिएशंस बा गामा रेडियो एक्टिविटी जनरली आंक सहित ही एसोसिएटेड थाए अच्छा न्यूक्लियर एनर्जी कौन व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी energy that is released in significant amount in process that affect atomic nuclei the dense core of atoms अच्छा एमितिया कौन सी एनर्जी जोटा कि सेतबेले रिलीज हुए जेतबेले एटम्स मानकर कोर माने कौन जो पोर्शन रे तांकर मोस्टली सब एटॉमिक पार्टिकल्स अछंती इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अछंती जदि सेही पार्टडा डिस्टर्ब हो जाउचंती ओके आ से डिस्टर्बेंस टाइम रे कौन सी प्रकार एनर्जी जदि रिलीज होची तले ताको कुआ जाय एज व्हाट nuclear energy okay it is distinct from the energy of other atomic phenomena such as ordinary chemical reaction which involves only the orbital electron अच्छा nuclear energy और chemical energy भितर difference कोन nuclear energy माने nuclear reactions जो होची तादरे electron proton neutron okay सब involved थांती किंतु chemical reactions रे only electrons मानकर ही involvement थाए one method of releasing nuclear energy is by controlled nuclear fission अच्छा आमे न्यूक्लियर एनर्जी केमिति प्रोड्यूस करूचे बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन डिवाइसेस नोन एज रिएक्टर्स ओके किंतु आउ गोटे प्रकार भी रिएक्शन अछि जाको कि न्यूक्लियर फ्यूजन कोंती जोटा कि अपन तो यूज तो हेई पारनी बट देयर आर प्रॉमिसेस इट होल्ड्स प्रॉमिसेस न्यूक्लियर एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड एक्सप्लोसिवली बाय बोथ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फिशन माने कोन Nuclear fission होची एमितिया reaction in which the nucleus of an atom splits into two or more smaller nuclei. Okay, जदि गोटे unstable atom रो nucleus निजको stable करिया पाई split हे जाउची खंड हे जाउची जोटा कि खंड हेकिनी split हेकिनी दुईटा किबा दुई रु अधिका nuclei हे जाउची ताले ताको हमें कहबा कोन nuclear fission. अच्छा nuclear fission process रे आपण कोन पांती ए process रे produce हुए gamma photons a both large amount of energy okay nuclear fission was discovered by chemist Otto Hahn and Fritz Strassmann and physicist Lise Meitner and Otto Robert Frisch fission is a process of nuclear transmutation because the resulting fragments or daughter atoms are not the same element as the original parent atom अच्छा आमे जानले कि एठी गोटे न्यूक्लियस ता डिवाइड हे जाय दुई किंबा दुई रु अधिका न्यूक्लियई को तबे ए जो नुवा डेवलप हेले आंको हम डॉटर न्यूक्लियई कहबा तबे देखबे ए पेरेंट न्यूक्लियई और डॉटर न्यूक्लियई को भितरे किछि प्रकार सामंजस्य न थाए दे आर नॉट सेम एज देयर पेरेंट्स एई प्रोसेस ता को कोन कह जाय ट्रांसम्यूटेशन माने म्यूटेशन जानि कि चेंजेस आको ट्रांसन्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहंती अच्छा
न्यूक्लियर फिजन प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर न्यूक्लियर पावर एंड ड्राइव्स द एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स रे मध्य आपनकर कोन हुए ओके न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस ही यूज हुए नेक्स्ट अच्छा both uses are possible because certain substance called nuclear fuels undergo fission when struck by fission neutrons अच्छा आमे fission nuclear fission केमती क्रिएट करि परिबा जदि गोटे अनस्टेबल न्यूक्लियस को आमे बॉम्बार्ड करूचे बा स्ट्राइक करूचे विथ न्यूट्रॉन्स नोन एज फिशन न्यूट्रॉन्स ओके एंड इन टर्न से न्यूक्लियस टा ब्रेक करि जाउची टू और अदर न्यूक्लियई को अलोंग विथ अदर सेट ऑफ न्यूट्रॉन्स माने देखंतु न्यूट्रॉन्स लागुची भी काम रे रिएक्शन करिया पे हमें न्यूट्रॉन्स यूज करूचे रेडियो एक्टिव प्रोसेस रे भी आउरी न्यूट्रॉन्स एमिट होचंती ओके तेणु आपण कहि परिबे कि ए पूरा रिएक्शन टी न्यूक्लियर फिजन रो गोटे चेन रिएक्शन टाइप रो चले गोटे चेन रिएक्शन टाइप रो ओके ना जतबळे ए चेन रिएक्शन टी अनकंट्रोल्ड मैनर रे चले सेटा न्यूक्लियर वेपन केस रे यूज हुए किंतु रिएक्टर केस रे आमे जनरली कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन यूज करू माने न्यूक्लियर फिजन टी को आमे कंट्रोल करिकिनी यूज करू the amount of free energy released in the fission of an equivalent amount of 235 uranium is a million times more than that of released in the combustion of methane एटू जना पड़छि कि जेतिकी एनर्जी आपन को फिशन रो मिलुची सेतिकी आपन को जिंस कंबशन कले बा हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स रो मध्ये मिले नाही The product of nuclear fission, however, are on average far more radioactive than the heavy elements. न्यूक्लियर फिजन रो बाय प्रोडक्ट हिसाब रे जो प्रोडक्ट गुड़ा फॉर्म हुए सेगड़ा मध्य रेडियो एक्टिव थांती जहाँ जो कि गोटे न्यूक्लियर वेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुए वर्ल्ड रे ओके हां एठी आपण देखि परतो जो जिंसटी हम कहले आमे केमिति न्यूक्लियर फिजन करि परिबा जदि गोटे न्यूक्लियस को आमे न्यूट्रॉन सहित बॉम्बार्ड न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करूचे किंतु आमे जानले कि एई प्रोसेस रे आउरी न्यूट्रॉन्स रिलीज होची से न्यूट्रॉन्स माने अगेन से जो डॉटर सेल्स मानको सहित रिएक्ट करले से प्रोसेस रे आउरी न्यूट्रॉन्स क्रिएट हला ए जो पूरा प्रोसेस थाए एटा कोन थाए दिस इज अनकंट्रोलेबल थाए ओके अनकंट्रोल्ड थाए ओके तेणु दरकार थाए कि जदि आमे सठिक भाव रे जिंस को यूज करिया को चाहूचे this chain reaction needs to be controlled केमिति if the chain reaction is controlled suitably we can get a steady energy output this is what happens in a nuclear reactor if the chain reaction is uncontrolled it leads to explosive energy output as in a nuclear bomb then we control केमिति होबो the core of the reactor is the site of nuclear fission एटी मने रखंतो गोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जो कोर थाए सेंटर टी थाए सेठी मोस्टली न्यूक्लियर फिशन हुए ए कोर टी को सराउंड करे गोटे रिफ्लेक्टर जार काम होची रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लीकेज कम करेबा ना जो हीट टा जनरेट होची फिजन समय रे आपको रिमूव करा हुए बाय यूजिंग अ कूलेंट अ कंटेनमेंट वेसल प्रिवेंट्स द एस्केप ऑफ रेडियोएक्टिव फिजन प्रोडक्ट द होल असेंबली इज शील्डेड टू चेक हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम कमिंग आउट अच्छा रिएक्शन रिएक्टर टाको शट डाउन केमती करी हबो बा कंट्रोल केमती करी हबो जो कहउथले कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चले ताको कंट्रोल केमती करी हबो बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड्स ए कंट्रोल रॉड्स कड़ा बनी थाए जनरली कैडमियम रु जो माने कि एब्जॉर्ब करी देंती न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करिया जो आउ फर्दर रिएक्शंस हुए नहीं दिस यू कैन सी दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ अ रिएक्टर कोर जो थे कि न्यूक्लियर फिजन होची कंट्रोल रॉड्स जो मानकर काम होची कोन न्यूट्रॉन्स मान को अब्सॉर्ब कले स्टॉप हे जवा रिएक्शन त माने जनरली कंट्रोल करते कि रिएक्शन टा केमिति होची आ चारि करे रिफ्लेक्टर होची जे कि मेक श्योर करची कि लीकेज न हो अच्छा ए जो फिजन जो हीट टा प्रोड्यूस होची सेटा कूलेंट द्वारा सेंड होची अच्छा ए हीट टा इथे आसी किनी टरबाइन्स मान को ए स्टीम को टरबाइन मूवमेंट रे कन्वर्ट करची ओके तो ए पूरा प्रोसेस टा आपनकर न्यूक्लियर एनर्जी रो प्रोसेस Nuclear fusion कौन when two light nuclei fuse to form a larger nucleus energy is released अच्छा fusion रे कौन देखुतले गोटे अनस्टेबल न्यूक्लियई हेवी न्यूक्लियई कन्वर्ट हो जाउतला 2 और मोर देन 2 को ओके न्यूक्लियर फ्यूजन रे किंतु कौन होची न्यूक्लियर फ्यूजन रे कौन होची ना
दुईटा लाइट न्यूक्लियई निज निज सहित कंबाइन होचंदी फ्यूज होचंदी टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियस जो प्रोसेस रे की एनर्जी रिलीज होची फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस द टू न्यूक्लियई मस्ट कम close enough so that attractive short range nuclear force is able to affect them. Now, however, since they are both positively charged particle, they experience Coulomb reflex. अच्छा normally जानो fusion माने कौन जोटी की दुईटा lighter nucleus निज पाखको आसुचंती और fuse हेगिनी गोटे heavy nucleus form करूचंती along with emission of some energy. अच्छा फ्यूजन रिएक्शन टी जनरली सन रे होची जोटी देखिबे कि हाइड्रोजन इज बर्न्ड इनटू हीलियम thus the fuel in the sun is the hydrogen in its core. अच्छा the natural thermonuclear fusion process in a star is replicated in a thermonuclear fusion device. In controlled fusion reactors, the aim is to generate steady power by heating the nuclear fuel. At this temperature, the fuel is a mixture of positive ions. We don't have to go into detail at all. Okay, आपण खाली जानतो nuclear fusion कोण, nuclear fusion कोण, तांका भितर difference टी कोण. Okay, so hopefully जेते की important parts थिला physics हाउ chemistry रो आमे ताको cover कले. Okay, some or the other way it will be beneficial for your exams. At least किछि important concepts बा news items को बुझिया पाए मध्य helpful हेई पारे. Okay, so all the best for your upcoming exams. We'll wind up now.